Hello. Welcome back to Almighty Sports Plus. And yes, it is basically a big night for a certain club, that is a Real Madrid or even a Frankfurt आप बोलोगे. लेकिन there are other news as well. इसीलिए मैं आ गया हूँ जल्दी. Yes, it was planned to be what at 12:20 और मैंने आ गया है भाई 12:10 को और शुरू कर दिया because रहा नहीं गया मुझसे. There's a lot to talk, and yes, of course, even there's a single person watching us live. That's brilliant because that means that यार अभी भी यार थोड़ा है, डेफिनेटली हिम्मत है और हम डटे रहेंगे यार. हम डटे रहेंगे. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अंकित, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. और यस, certainly there were, I think, close to 400 लोग देख रहे थे आज ऑलमाइटी ब्लूज एफसी. फॉर हु एम आई कैनॉट थैंक यू ऑल इनफ, ईच वन ऑफ यू. लेकिन भाई वो 400 लोग को इतना बता दूं, आई डोंट थिंक यू हैव वॉच्ड इनफ कंटेंट. अगर आपने देखा होगा तो यू वुड रियलाइज दैट वी आर अ लॉट मोर देन जस्ट बीइंग अ क्विज मास्टर. Yes, certainly there's a lot more football, there's a lot more passion. We can live on football, or not just football, we do a lot more as well जो हम देखते हैं, especially already sports plus पे. और transfers, yes, people are waiting यार उसमें यार, क्विज शो में यार देखिए ये हुआ है वो हुआ है. शाम से मैं देख रहा हूँ काफी सारी चीज हो रही है. आई एम जस्ट वेटिंग एंड वॉचिंग कि व्हाट इज द एंड स्टोरी, और हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे. नो टू वेज अबाउट कि यार इतने सारे ट्रांसफर स्टोरीज हो रहे, स्पेशली रिलेटेड टू द प्रीमियर लीग एज वेल एज ला लीगा. हम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली होना ही है. लेकिन हाँ, हाय अंकित, टुडे नो वीडियो. डेरिन कैसे हो भाई? यार हमने लाइव 2 सेशंस किया है. तो द थिंग इज, the days where I decide to go live twice a day, I have to be easy on myself. Like I said earlier, big up आपको, every one of you. यार मैंने लास्ट 1.5 साल से एक भी दिन का छुट्टी नहीं लिया, और आई एम रियली बीइंग सीरियस यार. I have not left my house. I have not, taken a single day holiday from the last 1.5 years, and that's a fact. और 550 वीडियो किया है हमने 1.5 साल में. अगेन जो लोग देख रहे हैं अभी, I know that they value me a lot, and I know that they respect me, and they believe in my content and my knowledge. और इसीलिए मैं थैंक करना चाहूंगा. लेकिन even for those who don't watch it, like that's the idea. हम आते हैं with shorter videos as well, almost every day, but यार live भी होते हैं यार. तो काइंड ऑफ वी आर बैलेंसिंग बिटवीन द टू बिकॉज मिड वीक है. लेकिन हाँ, क्रेजी नंबर ऑफ ट्रांसफर वीडियोस तो हम आएंगे. आज सुबह एक और वीडियो आएगी और ऑलमाइटी ब्लू सिटी, वॉच आउट फॉर दैट. अर्ली स्ट्रीम, बिल्कुल इट्स एन अर्ली स्ट्रीम देन व्हाट आई हैड प्लान. लाइक आई सेड, क्योंकि यार सुपर कप का रिएक्शन तो करना ही है अपने को. वील सी द लाइनअप्स इन जस्ट 2 मिनट्स. लेकिन यार उससे पहले क्रेजी न्यूज. और यहाँ पे सबसे पहले मैं सोच रहा था यार, वो पहले मैं लाइनअप शेयर करूँ कि क्या करूँ. By the way, oddly 007, thank you. No problem. And football creeks be here. Much love to you all as well. But यार जो भी देख रहा है, as I always request, let's share the stream. Just not like the stream, वो तो है ही. बैटरी है, खाना है स्ट्रीम का, लेकिन शेयर भी करिए. बिकॉज मेरे ख्याल से in the world there are a lot more people who know about football, including myself, and you all as well. So यार, if more people come, ज़्यादा discussion होगा अपने, and everyone in the footballing community love as well. यार यहाँ पर मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक सेकंड, मैं सबसे पहले तो लाइनअप सोच रहा था मैं करूंगा. लेकिन भाई आपको दिख रही है राइट साइड में कुछ न्यूज. ये है सबसे पहले न्यूज. एंड्रियास क्रिस्टियनसन एंड फ्रैंक केसी कुड लीव बार्सिलोना फॉर फ्री इन कमिंग डेज. डू यू बिलीव इन इट? फर्स्टली, डू यू बिलीव इन इट? आप बोलिए. आई डोंट बिलीव इन इट. हाँ, टेक्निकली इट्स नॉट रॉन्ग. डेफिनेटली वो एक ऑन है, बिकॉज अगर बाई चांस फ्रेंकी लास्ट मोमेंट में मना कर देते हैं, और उस पर भी आएंगे डेफिनेटली, अगर वो मना कर देते कि मैं नहीं छोड़ सकता बारसा, और मे बी ब्रैथवेट का भी जो चल रहा है सीन ना, वहां पर भी यार, इफ एन एंड स्टोरी इज नॉट फाउंड, सो इंस्टेड ऑफ दोस टू, एंड्रियास क्रिस्टियनसन और फ्रैंक कैसी को करना पड़ेगा रेस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 months. और वो हुआ है इन द पास्ट. यार लेट्स बी ऑनेस्ट, आई नो चेल्सी फैंस और बहुत सारे फैंस काइंड ऑफ ट्रोल कर रहे हैं दैट वुड यू टेक हिम बैक इन चेल्सी एटसेट्रा. भाई वो नहीं होने वाला. वो लोग बैठेंगे और नो फुटबॉल खेलेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव फुटबॉल. अगर वर्स्ट केस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल होगा नहीं, लेकिन आई सर्टेनली फील दैट जस्ट लाइक एन आर्डा टू रन, जस्ट लाइक अ डिएगो कोस्टा इन द ला लीगा. यार ऐसा हुआ है इन द पास्ट वेयर दे हैव नॉट प्लेड फॉर 5 months. वो होता है. ला लीगा इज नॉट अनहर्ड ऑफ. तो यार जो प्रीमियर लीग फैंस है यार, वो अपने होप्स बढ़ाए मत. एंड्रियास क्रिस्टियनसन वापस नहीं आने वाला. आई नो इट वाज अ पन इंटेंडेड बाय मेनी चेल्सी फैंस एज वेल. लेकिन यार फ्रैंक केसी, यार अगेन बिग अप टीम, देखते क्या होता है भाई. यस, मलंग सार फॉर 15 million. यस, हम आएंगे फ्रेंकी पर, बर्नार्डो पर डेफिनेटली आएंगे, और ऑफ कोर्स लाइनअप्स करेंगे डिस्कस क्विकली इन लास्ट 5 minutes भाई बिफोर द गेम स्टार्ट. लेकिन मलंग स्टार फॉर 15 million, बिगेस्ट हाइस्ट इन फुटबॉल हिस्ट्री. भाई ये अभी तक हुआ नहीं है. बिफोर वी गेट आवर होप्स अप, अभी है 600,000 का एक लोन फी,
and if that loan goes well, if he plays a certain number of matches, then there's an obligation to buy. तो ये है सीन बिरेन, कोई नहीं, लेकिन होपफुली he'll get those यार, बंदा इतना बुरा नहीं है for Monaco as well. लेकिन come on, people don't realize Foden in midfield is something different. City don't necessarily need to buy a player because we have Foden. Yeah, football critics, I respect the fact आप बोल रहे हो. I actually like that comment. As much as you would say that Bernardo Silva is going, there's a hole created. That's enough. मैंने किया था, आई थिंक वी डिस्कस्ड प्रॉपर मैन सिटी का प्रीव्यू किया था हमने नितिका के साथ. आई नो लिवरपूल मैन सिटी का सीजन प्रीव्यू, उसमें हमने क्लियरली बताए थे व्हाट आर द ऑप्शंस, व्हाट आर द बैकअप ऑप्शंस ऑफ सिटी. दे हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जहां पर पीपल कैन प्ले मल्टीपल पोजीशंस इंक्लूडिंग फोर्डन. तो वहां पर आई एग्री विद यू 100%. लेकिन हाँ, एक तो आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है यार आते ही स्टार्टिंग लेवल में आएगा. गुंडोगन इज अ स्टार्टर एनीवे, फोर्डन इज अ स्टार्टर एनीवे, मारेज बेंच पर थे वीकेंड में. Angita Zaha is keen for Chelsea move with Cho and Ziyech potentially leaving. Would you take him? यार the fact is Cho और Ziyech दोनों ही निकलने वाले हैं. लग रहा है that yes, as much as AC मिलान से खुश नहीं है Ziyech, I don't think they are moving fast because Charles Di Ketelaere आ गए हैं और उनके पास ऑलरेडी एक दो विंगर्स है. तो आई थिंक ऐसा कोई डेस्परेशन है नहीं AC मिलान के लिए. और डू दे हैव द मनी, क्योंकि दे आर आल्सो लुकिंग टू सेल वन और टू प्लेयर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू Zaha, मैं 100% लूंगा Zaha को, नॉट बिकॉज इज एन अपग्रेड ऑफ व्हाट वी हैव, लेकिन एज यू सेड यार, दो बंदे जाने वाले प्लस वर्नर आल्सो गोइंग, ऑलरेडी गॉन इन फैक्ट. तो वहां पर मैं देखता हूँ यार Zaha कैन काइंड ऑफ फिल टू स्पेसेस. मैड्रिड 10-0 जीतेगा, फुल जिंक्स. अरे इतना भाई, मुझे पता है क्या बोल रहा हूँ भैया. आज जर्मन क्लब हार गई ना, टी शर्ट निकाल के चिल्ला चिल्ला के नाचूंगा. अरे भाई साहब, लेट्स सी यार. अगेन बारसा फैन है संजीव हमारे, ऑब्वियसली हमें याद है यार, फ्रैंकफर्ट ने हराया था बारसा को. नॉट अ ग्रेट नाइट फॉर बारसा फैंस टू रिमेंबर, लेकिन इट वाज अ बिल्डिंग पीरियड फॉर बार्सिलोना. लेट्स, मेसी है आज, क्या नहीं यार, ऑडली यार. बाय द वे, Messi is left Barcelona last season itself. In fact, if I'm not wrong, technically just over 1 year हुआ है. तो he is in PSG. वो है लीगा में खेलते हैं. आज है रियल मैड्रिड और फ्रैंकफर्ट का सुपर कप गेम. तो ये होता है जस्ट फॉर न्यू ईयर वॉचर्स ऑफ फुटबॉल. दिस इज डेफिनेटली अ मैच बिटवीन चैंपियंस लीग विनर्स और यूरोपा लीग विनर्स. और वो क्या है उस पर भाई अगर अलग से हम बात करेंगे इन फ्यूचर. अंकित भाई, वुड यू टेक क्रिस्टियनसन अगेन? वो मैंने जवाब दे दिया, नहीं आने वाला वो. और अगर आता भी तो आई विल नॉट टेक हिम, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. आई वुड रादर जस्ट प्ले एमरसन एज अ सेंटर बैक. मैं सच में बोल रहा हूँ. सो व्हाई नॉट यूनाइटेड गो फॉर फ्रैंकी? अवेलेबल नहीं है यार. आई डोंट थिंक इट बी अवेलेबल. बाय द वे, बारसा यार, कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट, इवन दे नो व्हाट्स हैपनिंग. हो जाएगा यार, आई थिंक इट विल हैपन. या बोले या उस पर आएंगे भाई 2-3 मिनट भाई. अगेन द ब्रेकिंग न्यूज यहाँ पर तो शेयर करना बनता ही है. और यहाँ पर एक ट्रोल मैंने देखा है अभी तक का, अभी आई डोंट नो इफ आई कैन शेयर इट, लेट मी ट्राई एंड शेयर इट. यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं यार लोग ऑन ट्विटर. पता नहीं आपको लोग दिख रहे हैं क्या, पता नहीं, आप बोलिए. So basically, Frenkie faster than Dembele? Question mark. When you are running away from United, nobody is faster than you. Oh man, क्या ही तो बोलोगे यार. Anyway, let's actually go with some tweets यहाँ पर. ओबामयांग को तो पता ही था यार. आई एम जस्ट क्विकली गोइंग थ्रू ट्वीट्स. हाँ, ये वाला. तो दिस इज द लेटेस्ट अपडेट पीपल, फॉर पीपल जो देख रहे हैं भाई, व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिपाई, ओबामयांग एंड डियोंग. तो look at it. Barcelona have scheduled new round of talks on Thursday for both Pierre-Emerick Aubameyang and Memphis Depay. Chelsea are discussing an Oba side waiting for bid. Depay in talks for contract termination and UA pushing for 2-year deal, but Barca want to keep one of them. So in my opinion, Aubameyang to Chelsea, bhai, it is weak. Yes, as much as Aubameyang खुद, first of all, Matt Law ने भी बोला है that he would like to stay at Barcelona, he's happy at Barcelona, लेकिन he's open to hear क्या दे रही है चेल्सी ऑफर करने के लिए. यस, ही विल बी अ स्टार्टर एट चेल्सी पोटेंशियली, वर्सेस बारसा में नहीं है. लेकिन भाई 6 महीने हुए, उन 6 महीनों में अच्छा किया बंदे ने. और लुकिंग एट द वे बारसा आर बिल्डिंग, आई थिंक बारसा हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ट्रॉफीज. वो सच्चाई है, एज मच एज आई वुड नॉट लाइक टू से इट एज अ चेल्सी फैन, राइट. एंड अगेन भाई, 8 लोग देख रहे हैं, सब लोग यार प्लीज लाइक सब्सक्राइब अगर बाय चांस नहीं किया है. बट डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द स्ट्रीम. आप कैसे शेयर करोगे? I have basically, put a post on my community, if I remember right. Yes, मैंने डाला है on Almighty Blues FC. So Almighty Blues FC में मैंने community post डाला है. Please go and like that. It'll take a second. Please go and like the post on Instagram. It'll take a second. And automatically Twitter में एक जाता है.
whenever I go live, a link goes on Twitter as well. Rather, एक वीडियो जाता है. If you can just copy paste the YouTube link along with retweeting, that is brilliant. और मैं ये भी पूछना चाहूंगा यार, क्या यार बाकी content creators भी ऐसे पूछते हैं? Because I know it's coming down to that, because I know I have a lot of subscribers, but for whatever reason, they are not my followers, apart from the people who constantly come. So I love the people who are coming, but I would like to ask the remaining people, भाई आपने नाम के लिए सब्सक्राइब किया तो यार, I don't know what to say. If आपने सब्सक्राइब किया है, if you believe in my knowledge, if you believe in my content, then definitely come on, और आप feedback भी share करिए. It's more than welcome. So again, I hope this channel also grows to 4K, and so does Almighty Blues FC. यार एक महीना हो गया मैं बोल रहा हूँ 5K काफी करीब है. लोग there are 300 people watching together, like subscribe button नहीं दबा रहे, तो there is something wrong in me. I have to question my audience. So this is my only way of asking. So please let me know what is wrong with me. अगर आपको लगता है there is something totally wrong with me, I'll try and fix it. आपको लगता है सही है, तो I'll just continue, and people will start believing in me, which I definitely think I deserve. I generally believe, and lots many people do as well. No problem with that. Anyway, as a Milan fan, would you sell Tonali to Arsenal? यार, to be honest, नहीं. Tonali is almost, यार मैं बोलता हूँ, he has to be kept. मिलान का ना, the problem is यार, उन्होंने रेनाटो सैंचेज को भी नहीं लिया है, तो I don't think they can get rid of players अभी. Absolutely नहीं. फेक न्यूज है आर्टिकल. यार कर लेगी यार, बारसा सॉर्ट आउट कर लेगी यार. अगेन कमिंग टू डियोंग का यार, अभी भी लीगल मामला चल रहा है. यस, एज पर जेरार्ड रोमेरो, चेल्सी आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ मैचिंग अ डील विद बार्सिलोना. तो लग रहा है देयर इज बेसिकली सम अमाउंट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन चेल्सी एंड बार्सिलोना. लेकिन डियोंग खुद क्या बोल रहे हैं अब, दैट आई डोंट थिंक इट्स क्लियर स्टिल. देयर आर मिक्स्ड रिपोर्ट्स. कोई लोग बोल रहे हैं भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी डियोंग रिड्यूस करेंगे सैलरी लाइक अ डेम्बेले, सो विल अगेन बी डेम्बेलेड. लेकिन देयर आर पीपल सेइंग दैट नहीं, वो खुश नहीं है बार्सिलोना से. इनफैक्ट देयर आर आल्सो सम रिपोर्ट्स सेइंग दैट बार्सिलोना ट्रेनिंग में जब गए थे, ही एक्चुअली फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द फैंस. तो वो खुश नहीं है जनरली, एंड ही इज टेकिंग लीगल एक्शन. तो मुझे नहीं लगता है दिस इज गोइंग टू बी ओवर इन वन डे. दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी इन माय ओपिनियन. एज मच एज जेरार्ड रोमेरो आई बिलीव, लेकिन लास्ट स्टेज कितना लंबा होगा, टाइम विल टेल. लेट्स सी. अभी भी यार आई एम सिटिंग द फेंस, लेकिन लेट्स सी मंडे तक हो जाए फ्री. When clubs like PK is willing to play for free, when I think the stubbornness shown by Frenkie de Jong to neither leave. No, oh Divyanshu, much love to you, but come on bro, come on. मतलब you have to agree, even Barca fans 90% are agreeing that Frenkie de Jong के साथ जो हुआ है वो सही नहीं हुआ यार. Let's agree to it. हाँ, of course, as an organization आपने कुछ गलत नहीं किया है. I agree there, absolutely. और मुझे ये भी पता है काफी बारसा फैंस मेरा चैनल छोड़ के चले गए. I know that. मतलब I would like to give a shout out to, he was a mod यार. Where is he? I'm not seeing Rajesh nowadays in the house. But there is a problem because मैंने अपना जाहिर किया है views, and that is why I have a channel for. And I'm not going to say just to please everyone. The fact is that 90% जो बारसा किए एकदम सही किए, because उन्होंने बहुत basically in terms of Bartomeu, what all wrong things happened, we know. Wrong decisions were taken. लेकिन in terms of what Laporta has done, lot of things risk है, लेकिन वो अपने बदौलत लिया है risk, और they are doing well in that, and they are having a pull. That's a reality. But in Frenkie de Jong's case, the fact is, if I have a contract and it's been told that यार मुझे इस साल में इतना पैसे मिलने हैं मुझे, यार मैं जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ूंगा मैं खुश नहीं हूँगा. That's a fact. हाँ, how is he playing? How is he being there? Because it's his dream club. I understand all that. लेकिन at some point we're talking millions of dollars here. We're talking millions of euros. तो I don't think हम डिफेंड कर सकते हैं बार्सिलोना को. वो हाँ, बार्सिलोना ने जो लूपहोल निकाल के आया है in terms of that legal procedure कि गलत था कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा. बाय द वे हम सुपर कप रिएक्शन आएंगे 5 मिनट बिफोर द किक ऑफ, बिकॉज हमने प्रीव्यू डिटेल में किया था बहुत. तो एनीवे, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, देखिए यार वो सब लूप होल इसलिए निकाला गया है बिकॉज बार्सिलोना आर लुकिंग फॉर अ वे आउट टू गेट रिड ऑफ हिम. एंड व्हाई शुड ही बज? आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग दैट ही शुड बज. He is not owning the club. He is not someone who's been born and brought up there. Yes, it's his dream club. But at the end of the day, you are working for an organization. You are just 24, if I'm not wrong. You are having a career in front of you. You can become the world's best midfielder. That is the potential, not anywhere close, Abhi. So why should he budge? Mera ye question is, Divyanshu. So let's not defend that, yaar. Let's defend everything else. I am with you on that 100% Barca fans, but not on Frenkie de Jong.
हाउ कैन आई डिफेंड दैट? आई कैन नॉट. इवन बारसा फैंस, नहीं कल ही मैं बात कर रहा था भाई विनायक से और विद उस्मान भाई एंड ऑल दैट, एवरीवन अग्रीज दैट विद फ्रेंकी के साथ जो हुआ है, इट इज व्हाई शुड फ्रेंकी हैव बज्ड. हाँ, एज अ चेल्सी फैन आई वुड लाइक फॉर हिम टू बज यार. इधर वे आप डिसाइड कर लो, या तो आप रहो या तो नहीं रहो. आप क्लियरली स्टेटमेंट दे दो पब्लिकली, दैट वुड बी बेस्ट. लेकिन आई डोंट थिंक यहाँ पर व्हाई शुड ही डू दैट. मतलब आप, मैं मेरे घर पे नहीं करूं यार. सच में मेरे घर पे अगर मुझे कोई प्रॉमिस किया गया है, मुझे एक चीज मिलना है एट अ सर्टेन टाइम एंड नॉट गेटिंग इट, आई विल सर्टेनली अगेन रिटालिएट. यार सॉरी है दिव्यांशु, अगेन नॉट अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर बारसा फैन. दिस इज जनरली नॉट अगेंस्ट बारसा एज वेल. दिस इज व्हाट द रियलिटी इज, द फैक्ट्स. मे बी दैट इज द थिंग जिसके लिए लूप होल्स ढूंढे गए, जिसके लिए लॉयर्स बुलाए गए. I don't think a normal player contract requires all this. Obviously, there is something more in that. I don't think Frenkie का कुछ ड्यूटी है to just budge what Barca are doing. मैं तो यहाँ पे strong opinion रखता हूँ यार काफी. भैया Arsenal and Liverpool are linked with Yeremy Pino of Villarreal. Do you think he's a great player? For me, he's a very good player. Yeremy Pino यार, हमने last year जब Villarreal के साथ खिला था, he was one of the danger players marked. Yeremy Pino can play as a proper winger, and I think he's a very good player. लेकिन हाँ, in terms of Premier League, doesn't he play in the same wing as Saka? थोड़ा सा मुझे नहीं लगता Arsenal will go because Saka is probably better off in the right wing, in my opinion. और Yeremy Pino, yeah, good sub, but will he agree to come as a sub? वो मेरा question mark in World Cup year. And एक second, Yeremy Pino कहाँ का यार? Let me just check. I think it's Spanish itself, or I think he has a decent chance. He's just 19, I know, but I think he has a decent chance. Let's see. FIFA thinking of cancelling the Club World Cup this season. Views. Oh wow, ये मुझे पता नहीं था. मुझे ये पता था कि FIFA is planning to include one early match. तो एक दिन पहले वर्ल्ड कप शुरू होगा. ये मैं पढ़ा हूँ बिकॉज आई थिंक होस्ट खेलती है पहला मैच और फॉर सम रीजन होस्ट नहीं खेल रही थी फर्स्ट मैच, तो दैट माइट हैपन. लेकिन क्लब वर्ल्ड कप का आई डोंट नो मैन. आई थिंक अगर होता है तो ब्रिलियंट है. चेल्सी फैन मैन, एज इन वी आर द क्लब वर्ल्ड कप चैंपियंस एंड यस एज वी स्पीक अभी भी वी आर सुपर कप चैंपियंस. यस, पीपल आर अगेन much love to everyone who's here. I cannot thank you enough. I'll remember these names for the rest of my life यार. Again, I'm really seeing it from the bottom of my heart, right? Again, मैंने हर एक comment नहीं लिया तो sorry about that. And of course, nothing against anyone. यार मैंने जो views देना है मैंने देना है यार. I don't do it for just to look good, because the reason why I started the channel is to express my views, and not only me, बहुत लोग ऐसे ही करते हैं, right? Most of them. तो वही है. तो मैं तो यार बताऊंगा definitely, लेकिन चैट आपके लिए ओपन है. डेफिनेटली आप भी बताइए. अगेन कीप इट विद इन द लाइंस. एब्सोल्युटली it was unprofessional on the agent's part, plus these irregularities are usually over dramatized. No case will be placed by Laporta. It would demean the club in many ways. Okay. Hi to Piyush bhai yaar, kaise ho? JSK hello. Bhi Bipra as always. Divyanshu as always. Football Freaks. Mujahid in the house. Sehaj is the house as well. Sanjeev Oddly 007. Aman as well. Love as well to you bro. मच लव आदित्य है ऑफ कोर्स. देखिए यार, यहाँ पर मैं गिन कर यहाँ पर हैंडफुल ऑफ चेल्सी फैंस ढूंढ सकता हूँ यार. चेल्सी फैंस देखते हो यार, और चेल्सी फैंस को लेकर आइए, और बाकी फैंस अपने क्लब के फैंस को लेकर आइए भाई. बिकॉज यहाँ बता दीजिए कि यहाँ पर है एक बंदा जो बेसिकली एंड टू एंड बात कर सकता है, क्षमता रखता है थोड़ा. लेकिन कोई नहीं यार, मैं तो यार दिन भर चलते रहता हूँ, ऐसे ही भाषण देते रहता हूँ. यहाँ पर देखते हैं यार, लाइनअप देख लेते हैं क्विकली, बिकॉज आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ मिस दैट आउट. 2 मिनट लिटरली बाकी है, तो मैं थोड़ा सा तो रिएक्ट करूंगा. काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड, ऐसा कुछ शॉक नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया. आई नो सुपर कप है, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन शुड बी रियल मैड्रिड. सॉरी रियल मैड्रिड फैंस, लेकिन हाँ यार काफी सारे न्यूज आए थे और पीपल वर काइंड ऑफ bombarding me with messages on the the quiz stream जो हुआ था, हमने हुआ मैं स्ट्रीम हुआ था, इसलिए मैंने रिएक्ट किया था. बट कोई नहीं. देखिए यार यहाँ पर तो सरप्राइज नो रूडिगर. As a Chelsea fan, I would say definitely surprise, because as much as Ancelotti would like to go with the tried and tested side, I think Rudiger आपने लाया था कुछ upgrade your defense, if I'm not wrong. तो थोड़ा सा surprise हूँ. Yes, he is not a natural left center back and a 4 at the back compared to a 5 at the back, but pre-season में उन्होंने लेफ्ट बैक में भी काफी अच्छा किया था, in my opinion. Again, not better than Araujo at right back of Barca, but pretty good. ठीक है. एंड मेंडी इज वेरी गुड, लेकिन जस्ट सेइंग इट, क्या क्यों लाया भाई? रूडिगर शुड क्वेश्चन हिमसेल्फ. आई नो इट्स रियल मैड्रिड, बट इट्स अ फैक्ट. टॉकिंग अबाउट फ्रैंकफर्ट यार, Godse is not on the pitch. Mario Godse is not on the pitch.
कमाडा जैसे मैंने बोला था, he'll play more centrally. I was proven right in my preview. अगर आपने मिस कर दिया तो यार बहुत मिस किया, because हमने टैक्टिकली डिस्कस किया था where they can kind of put pressure, because कमाडा यार बहुत ही अच्छे हैं in terms of लिंडस्ट्रॉम के साथ to kind of press, और बोरे is a brilliant finisher और big games में है ही उनका. They can be only the second German club to actually win the UEFA Cup ever. The UEFA Super Cup ever, right? यहाँ पर उनका जो है टूटा और इंडिका का अच्छा पार्टनरशिप है. यस, टूटा को एक रेड कार्ड मिला था इन द यूरोपा लीग, आई रिमेंबर टुवर्ड्स द एंड, लेकिन बिहाइंड वाज केविन ट्रैप, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड गोलकीपर्स इन माय ओपिनियन. आप बोलिए क्या होने वाला है इस मैच का. बाकी यार वैल्वर्डे स्टार्टिंग, या नो सरप्राइजेस, बिग मैच है, इट्स अ कप गेम एक्सपेक्टेड. लेकिन भाई मैच का ये बेंच देखिए, बेंच में there's a difference. मारियो गोट्से probably आप बोलोगे, लेकिन he's not the Mario Götze of 2014 World Cup. So let's get it right. Eden Hazard, Marco Asensio, Mariano भी है, Rodrigo of course, Chouameni, भाई Camavinga, Rudiger, oh my God, Vasquez, what a Nacho, what a bench यार रियल मैड्रिड का. वही मैं बोल रहा हूँ ना, सरप्राइज्ड that Rudiger is not starting, to be very honest, as much as Mendy अच्छे हैं. अरे यार मिकाइल कैसे हो यार. Very good to see Mikhail always, bro. Always great to see him, and he knows the stuff inside out. Yes, a Chelsea ultra, but Mikhail, we got to talk lots. I am talking with Coachella. By the way, match is about to start right now. It is still 0-0. Obviously, match has not started, but I'm going to. Hopefully, we are going to do a stream on weekends. हम करेंगे एक बार एक कोलैब करेंगे रेगुलरली ऑन वीकेंड. वन स्ट्रीम एटलीस्ट वी शुड डू यार, ऑल द चेल्सी अल्ट्रास. व्हाट डू यू थिंक मिकाइल? लेट्स ट्राई एंड फिक्स अ टाइम. UCL फाइनल टीम स्टार्टिंग, या बिल्कुल, आई थिंक दैट इज, उनको रिवॉर्ड दिया है सेफ. आई एग्री विद यू दैट, बाय द वे, बिग अप शेफ यार, अपने मेंबर है ऑलमाइटी ब्लूज एफसी के यार, डेफिनेटली यार, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे गॉट द कप, सो फेयर इनफ, एक रिवॉर्ड दिया. लेकिन फिर भी यार रूडिगर नॉट स्टार्टिंग, आई डोंट नो व्हाट टू से. बाकी सब ठीक है, आई अंडरस्टैंड कामाविंगा एक्सेट्रा बीइंग ऑन द बेंच, लेकिन रूडिगर नॉट स्टार्टिंग मेरे लिए काफी सरप्राइज है. ऑब्वियसली चश्मा आ गया है, बिकॉज हाँ यार एज का नहीं है, इट्स अ नॉर्मल चश्मा पावर का बिफोर पीपल स्टार्ट जजिंग. सो यस, मैच शुरू हो गया तो यार देखना बनता है थोड़ा, नहीं. रूडिगर इज अबाउट टू गिव सम, ओके, आई डोंट थिंक इट वाज जस्ट मिलिटाओ's competition यार. कम ऑन, रूडिगर मतलब ऑन form, I think he was among the best center backs in the world last summer. I am not even joking. अरे भाई, what a Hollywood pass from Alaba यार. Alaba इसलिए सेंटर हाफ में, आई थिंक वही है, ही इज अ ग्रेट लॉन्ग पासर यार. अरे सर, फ्री किक कैसी लगी थी? अरे बिल्कुल यार आशीष, अब मजा आ गया आपका देखकर फ्री किक. आशीष ने मुझे डीएम किया था, तो दिस इज अबाउट फीफा वी टॉकिंग अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स. और यस, बाय द वे, फीफा में हम जीत गए यार. पीपल वाचिंग, वी हैव वन द प्रीमियर लीग फॉर पीपल हु मिस्ड इट, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल मिस्ड इट, क्योंकि भाई आप लोग को कॉमनवेल्थ गेम्स में कम थोड़ा इंटरेस्ट होगा. हमने उसके बारे में बात किया था, एंड ऑफ कोर्स फीफा भी किया था, बट ऑफ कोर्स जो लोग देखे थे भाई, काफी थैंक्स, बिकॉज यू गाइस सपोर्टेड मी इन द एंटायर सीजन, एंड वी हैव वन द प्रीमियर लीग, एंड फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग अभी बाकी है, तो देखते हैं क्या होता है. हाला फ्रैंकफर्ट, ओके, तो चलो जाबिर सपोर्ट कर रहे हैं फ्रैंकफर्ट को. कैन वी रैंक बेंजेमा फॉर संडे में भी? ओके, लाइफ में कैसे दिन आ गया भैया, मैड्रिड को सपोर्ट कर रहा हूँ आज मुझे तो. अरे भाई साहब, ये क्या हो गया संजीव? अरे मिकाइल, बिग अप यार, definitely यार, fist pump for you. Tell me one thing, don't private companies lay off the employees for either the, yes of course, लेकिन budget issues of course they do. I don't understand, so it's not a layoff also ना. Basically क्या हो रहा है यहाँ पर यार, they are like forcing a situation so that he goes off by himself. तो ये भी होता है, तो एथिकली वो करेक्ट नहीं. और इनफैक्ट मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता हूँ, आई माई सेल्फ हैव वर्कड इन अ मल्टीनेशनल, और वहां पर उन्होंने मेरा एक वन ऑफ माय फर्स्ट कंपनीज, इनफैक्ट उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया था. मैं सच में बोल रहा हूँ, विदाउट टेकिंग द कंपनी नेम ऑब्वियसली. लेकिन और मैंने, आई वॉकड आउट. लेकिन वही है, दे वर ट्राइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन फॉर मी सो दैट आई वॉक आउट, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू pay every employee, so that happens. But again, see, that's the difference, right? यहाँ पर we are talking millions, so there you cannot just do that and get away with those millions. So they are trying to cover it up with a lot of things, which is something, देखो, legally they are not doing anything totally wrong. What I'm saying here is ethically, not about legally. This is about ethics here, because आपने अगर नहीं पे कर सकते हो तो यार आप बोलिए नहीं पे कर सकते हो, बेसिकली आप you just tell him that we cannot pay you, you got to go, simple as that. I don't think as clear as day, correct me if I'm wrong. Everyone expecting Real Madrid to win, but लग रहा है फ्रैंकफर्ट ले जाएगा. अरे भाई, लेट्स सी. अभी तक मेरा थोड़ा सा डाइसी शुरू हुआ है मैच. इट्स काइंड ऑफ, आई वुड से
ऑलमोस्ट 50-50, लेकिन हाँ रियल मैड्रिड अगेन विनिंग पोजीशन, यहाँ पे कारवाल सेंट्रली खेल रहा है ऑलमोस्ट. Tonali has reported racial discriminations in Milan, called him untouchable this summer. Oh my god, Adway and his jokes, yaar, mast. Although Sterling, Koulibaly, both are fantastic signings, still I think Kukurea should be the best signing Chelsea has done this season. He was the next big thing when he was in La Liga, La Masia. Okay, yeah. Aritra 100% यार यहाँ पर अगेन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज भाई चिलवेल का भी मैंने बोला था पिछले सीजन में व्हाट ही डिड इन द चैंपियंस लीग फॉर अस, और पता नहीं मेरी नजर लगी है किसकी. द फैक्ट इज यार जोकिंग, द फैक्ट इज ही वाज इंजर्ड. तो यार लेट्स सी, जूरी इज आउट, लेकिन आई एग्री विद यू, प्रीमियर लीग में अच्छा किया है बंदे ने और काफी यंग है. ही कैन प्ले मल्टीपल पोजीशन, दैट आल्सो हेल्प्स. आज साहब क्या फ्रैंकफर्ट को ओह माय गॉड, वेयर डू यू थिंक फ्रैंकी विल प्ले नेक्स्ट सीजन? ओके, स्पोर्ट्स अपडेट्स. यार मेरा जो कल सुबह तक था प्रेडिक्शन, इफ यू सी माय स्ट्रीम्स रेगुलरली, बाय द वे थैंक्स फॉर कमिंग ऑन, was that Frenkie is going to be staying in Barca taking a low salary. ये मेरा प्रेडिक्शन था, लेकिन गोइंग बाय आज के रिपोर्ट से जेरार्ड रोमेरो एक बार बोल दिया ना, मतलब अभी तो यार मैं भी बोल रहा हूँ, जेरार्ड रोमेरो एक बार बोल दिया तो यू कैन नॉट हेल्प इट. So that is where I'm saying that 100%, you know, there is a lot of talks going between Chelsea and Barcelona. लेकिन until the story is over, it's never over. तो अभी भी chances है कि he stay in Barca, but I think look, going by the last few hours, I think मेरा tilt कर रहा है थोड़ा अभी Chelsea पे. क्या लगता है फ्रेंकी आएगा? भाई लग तो रहा है यार, CFC ब्लूज अगेन मैंने सेलिब्रेट नहीं किया है अभी तक, लेकिन हो सकता है सुबह आपको एक वीडियो मिले, हो सकता है. एक और क्लिप. ओके, नो प्रॉब्लम यार. Frankie is too complex. No one is wrong in that complex except Bartomeu. यार बार्टोमेओ के ये गंदगी की फैलाई थी उसने यार, क्या कर सकते हैं अब यार. वही है लूपहोल्स, बोथ फ्रैंकी की पार्टी लूपहोल्स ढूंढ रहे, बारसा लूपहोल्स ढूंढ रहे. मीनवाइल यू नो बारसा आर होपिंग दैट चेल्सी या मैनचेस्टर यूनाइटेड पे कर ले अगर जाता है दोनों जगह. अब देखते हैं भाई हो. अभी बाय द वे नाइस फ्रैंकफर्ट प्लेइंग फ्रॉम द बैक, नाइस प्रेस बाय विनीशियस जूनियर, but to no avail. Frankfurt keeping possession, people. They're keeping good possession, by the way. This is different from layoffs. यार अगेन कमिंग बैक टू Zaritra, मतलब मैं रॉन्ग राइट का नहीं है, मतलब अगेन टेक्निकली देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन वही है ना, एज एन एम्प्लॉय मे बी आई एम लुकिंग एट फ्रॉम एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव, मैं एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहा. हो सकता है जैसे यू नो दिव्यांशु ने बोला, लेकिन यू नो आप इफ यू आर and you are one of the most reputed organizations in world football, as a matter of fact. So I think you have a responsibility because आपको करना है फ्यूचर रिक्रूटमेंट. और ये मेरे ख्याल से ESPN ने डिस्कस भी किया था कि aren't you little bit you know थोड़ा सा circumspect नहीं होगा अगर आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो बार्सिलोना में इन द फ्यूचर, तो वहां पर थोड़ा देखिए, इट्स नॉट गुड फॉर बारसाज PR एज वेल ना. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ एथिकली दे शुड हैव प्रोबब्ली डन द राइट थिंग. और यस पॉसिबल नहीं था तो अलग बात है, लेकिन क्या ही तो कर सकते हैं. मतलब दे आर मेकिंग साइनिंग हाईजैकिंग ऑन द अदर हैंड. हाँ मतलब वही है. तो इन लेमैन्स टर्म्स, तो आई नो बारसा फैंस मे नॉट लाइक मी सेइंग इट, बट इन लेमैन्स टर्म्स दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स. तो दैट इज द रियलिटी ऑफ इट, स्पेशली फ्रॉम फ्रेंकीज पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन अगेन टेक्निकली legally I don't think there's anything wrong because यार every company at some point in time they strategize, ठीक है, they have their priorities. और ये layoffs भी होते तो आप देखो यार, सबसे पहले डायरेक्टर और सबके होते हैं, राइट. तो that is a common thing. My stream is glitching where Mbappe and कि अभी फ्रेंकी खा रहा है थोड़ा. अरे एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ अदवे सबसे भाई, एक चीज तो यार फ्रैंकी क्यों हो गया ये भाई. बारसा फैंस आप समझाइए मुझे. मतलब मैं खुद फ्रेंकी डियोंग का बहुत बड़ा फैन हूँ. मैं खुद फॉलो करता हूँ डच फुटबॉल बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस. फॉर पीपल वाचिंग रेगुलरली नो दैट यू नो डच फुटबॉल इज समथिंग दैट आई प्रॉब्ली स्टार्टेड ऑफ माय फुटबॉल करियर, यू नो वाचिंग नेशनल टीम का. लेकिन फ्रैंकी क्यों हो गया भाई? फ्रैंकी इज इट सो डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस इट? आई एम जस्ट आस्किंग. इट्स फ्रैंकी डियोंग, इट्स नॉट फ्रैंकी यार. But thanks Adwe for reminding me that. The most surprising thing happened this transfer window is it's happening one over here we go. Oh हाँ, एक मीडिया जो है ना, इंग्लिश मीडिया वर्सेस स्पेनिश मीडिया, जर्नलिस्ट भाई उन लोगों का जो स्टेटमेंट है ना, हु इज गोइंग टू गिव द राइट स्टेटमेंट फर्स्ट. अरे यार फ्रैंकफर्ट ने हेडर मिस कर दिया यार, डिफेंसिव हेडर था, इट वाज सो हाई लेकिन मिस कर दिया. By the way, rumors of Barca and Man City agreement of 55 million for is complete nonsense. Okay, wow, yes, मैंने देखा था ये मैंने I follow him on Twitter. That's right, JSK.
You know what, लेकिन आई थिंक बर्नार्डो इज कमिंग आउट एंड सेइंग सर्टेन थिंग्स. आई थिंक वो तो मुझे लग रहा है, इसीलिए ना फ्रेंकी का इतना सारा चीज लग रहा है. भाई बर्नार्डो तो आने वाले, अब वो, अब देखते हैं बर्नार्डो अगर रजिस्टर नहीं कर जाते तो विल ही वेट फॉर 5 months? इज ही दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर? बिकॉज पोर्चुगल का है वर्ल्ड कप ईयर, ही शुड बी रेडी फॉर दैट. तो देखते हैं यार, आई रियली डाउट इट. मैन सिटी में इफ ही कैन स्टे दिस ईयर, ही इज ओपन फॉर बोथ द थिंग्स. वहां पर भी यार जस्ट लाइक अ फ्रैंकी, इट्स थोड़ा सा अभी सो है, लेकिन इट्स टिल्टिंग टुवर्ड्स बारसा गेटिंग बर्नार्डो एंड चेल्सी गेटिंग फ्रैंकी. और मैन सिटी यार, दे डोंट नीड फ्रैंकी एज मच एज probably Chelsea, I would say. Amit bhai, how do you rate Fofana? Bhai, Fofana can become the France center back for the next 10 years. He's that good. ठीक है, I really mean it. लेकिन सालिबा फोफाना दोनों का, अरे भाई बढ़िया थ्रू बॉल था ओवर द टॉप. लेकिन कोटवा, नाइस वर्क बाय हिम यार. कोटवा नाइस वर्क, आई हैव टू से, एज अ चेल्सी फैन. बट एनीवे, द फैक्ट इज दैट फोफाना इज दैट गुड. प्रॉब्लम is he the finished article yet, Darren? No, he's not the finished article. By the way, people, I have a slight cold, so यार माफ करना, थोड़ा सा पानी पीऊंगा बीच बीच में. चलो, मैड्रिड फैंस चिंता मत करो. चलो चिंता मत करिए, इज व्हाट आरित्र बोल रहे हैं. ये क्या इंजरी हुआ है क्या कोई नहीं. In business, sometimes you need to make some harsh and ruthless decisions, and it's not that they haven't given him a chance to leave. They gave him options to look for other clubs. Yeah, but देखिए यार, आई डोंट थिंक क्लियरली बताया ना कि यार आप, हमारे पास पैसे नहीं है, वी कैन नॉट अफोर्ड यू, प्लीज गो. मतलब, लेकिन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, एज पर द करंट कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट दैट दे आर ओइंग ना टू हिम. तो व्हाई शुड ही लीव बिफोर दैट? अब मेरे साथ अगेन पर्सनली भी हुआ था. मतलब जस्ट टू बी अगेन शेयरिंग विद यू, दिस वाज माय सेकंड और थर्ड ऑर्गेनाइजेशन जहां पर देयर वाज अ सर्टेन बोनस कंपोनेंट व्हिच वाज प्रॉमिस्ड इन राइटिंग, और दैट वाज पार्ट ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट. और मैं ना छोड़ गया था कंपनी, और कंपनी शायद अच्छा नहीं कर रही थी, एंड आई गॉट अनदर ऑफर. मैं चले गया था, बट ऑन द बेसिस दैट मुझे वो मिलने वाला बोनस अमाउंट मुझे मिला नहीं था. आई काइंड ऑफ डिडंट गिव अप, एंड आई गॉट दैट मनी. और मैं तो मिलियंस के आसपास भी नहीं हूँ यार. So I'm just saying that that's a natural tendency. So yes, you would say that Frenkie are those kind of footballers have so much money, but उनके expenses भी इतने होते हैं ना. So for them it's the same thing. So they would also want that, and it's not just them. याद रखिए, इनकी टीम होती है पूरी. तो टीम are basically going the legal way. Man City hold 80 million price tag for Silva. Okay. यार नहीं यार, मेरे ख्याल से पेप जाने देंगे उनको. That's my opinion. बारसा लाई थी उस मैच के बाद, हमें वो डियोंग कभी नहीं दिखा, एंड सो आई एम हैप्पी इफ ही लीव्स. ओह वाओ, दैट्स अ फर्स्ट संजीव. यार उन्होंने काफी इंप्रूव नहीं किया लास्ट 6 महीनों में. हाँ, लास्ट 2 साल में इतना नहीं किया था अंडर कोमन, स्पेशली बिकॉज कोमन और सेंटर हाफ खिला रहे थे उनको. मे बी चेल्सी और आल्सो ब्रिंगिंग हिम सेंटर हाफ, हू नोस. अगर आता है तो बिकॉज हमारे पास फफान आ नहीं रहे. भाई भाई नाइस भाई, फ्रैंकफर्ट का बढ़िया यार. ऑफसाइड है क्या? कोटवा ने सेव किया, लेकिन ऑफसाइड. बढ़िया थ्रू पास था, वन टच फुटबॉल, लेकिन ऑफसाइड है. कोई नहीं. देखते हैं यार. मतलब इन माय ओपिनियन फ्रैंकी इज स्टिल अ वेरी गुड प्लेयर. आई डोंट थिंक उनका जो प्लेयर का जो एबिलिटी वो कम है और समथिंग लाइक दैट. हाँ, इज ही दैट लेवल ऑफ प्लेयर जिनके लिए इतना ड्रामा हो रहा है पूरे समर में? एज मच एज आई एम अ फ्रैंकी फैन, आई एम अ डच फैन, मैं बोल रहा हूँ नहीं, ही इज नॉट दैट लेवल ऑफ प्लेयर. आई नो ये स्ट्रेंज रहा है यार, जूल्स कुंडे के लिए इतना मारा मारी. आई नो आप बोलोगे आई एम मे बी थोड़ा बहुत बिटर. लेकिन मैंने यार, अगेन फॉर पीपल हु क्लोजली फॉलो माय स्ट्रीम्स फ्रॉम डे वन, उनको पता है दैट आई डोंट रेट जूल्स कुंडे एज अ फिनिश्ड आर्टिकल, जस्ट लाइक मैं रेट नहीं करता फ्रेंकी एज अ टोटली फिनिश्ड आर्टिकल. तो दैट्स द रियलिटी. लेकिन फ्रेंकी एट दिस पॉइंट इन टाइम इज फार अहेड इन द करियर इन टर्म्स ऑफ जूल्स फ्रॉम एज कंपेयर्ड टू जूल्स कुंडे. देखते हैं 50 मैच नहीं बेचेंगे यार. वही है 50. यार दे जस्ट रीस्ट्रक्चर द डील. 50 बेस कर लेंगे, प्लस 10 कर देंगे, तो 60 हो गया. वही कर लेंगे. मतलब इन माय ओपिनियन यार, सिटी को पैसों की जरूरत है क्या, ये बोलिए पहले. व्हाट इज द नीड फॉर मनी? बिकॉज दे हैव सो मेनी एसेट्स. यार दे कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन माय ओपिनियन. आई नो एफएफपी आल्सो कम्स इनटू पिक्चर बाय द वे. यहाँ पे विनिशियस ट्राइंग फॉर अ ड्रिबल, लेकिन नहीं. नाइस डिफेंस बाय फ्रैंकफर्ट. Lucas Paqueta is replaced with Silva next year. Yeah, नहीं, आई डोंट थिंक बेलिंगम आएगा यार. बेलिंगम
बिकॉज कैल्विन फिलिप्स अभी तक एक गेम शुरू नहीं किया और अभी बोल रहा बेलिंगम आएगा. बेलिंगम इज ही प्लेज इन दैट पोजीशन. आई नो वो खेल सकता है इन अ नंबर 8 टिपिकल एज वेल, लेकिन आई थिंक इज मोर लाइक अ नंबर 6 इन माय ओपिनियन. तो यहाँ पर आई डोंट सी बेलिंगम कमिंग टू सिटी, लेकिन आई कैन सी लुकस पकेटा कमिंग. और द फैक्ट इज वहां पर, अरे नाइस थ्रू बॉल, कमाड़ा कमान, अरे यार मिस कर दिया गोल. वो नो मैन, 100% वो गोल होना चाहिए था. व्हाट अ थ्रू बॉल, वाओ. ओलिवर ग्लासनर यार, क्या कोच यार, ब्रिलियंट भाई. ओपनड अप, रियल मैड्रिड डिफेंस ओपनड अप थरोली. वो फिनलैंड में हो रहा है गेम बाय द वे यार, हेल्सिंकी स्टेडियम में. मजा आ गया होगा जस्ट टू सी दैट. और हाउ अबाउट द स्टेडियम, इज दैट स्टेडियम ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ फ्रैंकफर्ट फैंस? वो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने का. पीपल हियरिंग, क्या लग रहा है, चैंट ज्यादा मैड्रिड के आ रहे कि फ्रैंकफर्ट के आ रहे? हाँ, तो लुकास पकेटा यार ऐसे भी स्टार्ट नहीं करेंगे, तो इट विल गिव हिम अ गुड टाइम, जस्ट लाइक डार्विन नूनेज कम टू लिवरपूल ना. लिवरपूल में उनके पास ऑलरेडी फर्मिनो है, ऑलरेडी जोटा है, तो ऐसा नहीं है डार्विन नूनेज को हर एक गेम स्टार्ट करना पड़ेगा. तो वैसे ही है लुकास पकेटा का सीन. वहां पर गुंडोगन है, वहां पर कैल्विन फिलिप्स है, काफी लोग हैं जो कवर अप कर सकते हैं. फोर्डन है. मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं मैड्रिड को सपोर्ट करूंगा. आशीष होता है यार, एवरी देयर इज अ फर्स्ट ऑलवेज. अरे यार, लव यू एज वेल यार, लव ऑल ऑफ यू इनफैक्ट. मतलब अगेन, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, मतलब जो लोग देख रहे हैं ना, मतलब वॉच अलोंग्स में मैं देखता था. आई यूज्ड टू सपोर्ट अ लॉट ऑफ चैनल, आई स्टिल सपोर्ट अ लॉट ऑफ चैनल्स, लेकिन भाई इतना कंटिन्यूअसली नहीं देखता था जितना कुछ लोग देखते हैं भाई. आप लोग भाई, नाइस थ्रू पास ओवर द टॉप एंड विनीशियस जूनियर इज गेटिंग द बॉल ऑन द विंग्स, लेकिन आई डोंट थिंक उन्होंने रखा है बॉल अंदर को. ही लॉस्ट द पोजीशन. दैट वाज वेरी गुड यार, दैट वाज वेरी गुड. Bellingham apparently values the 120. Oh, bhai. English player, we will even pay 300 million required. अरे डेक्लन राइस यार, यार पीपल चेल्सी फैंस, डेरेन आप लोग बोलिए यार, चेल्सी फैंस यार, डेक्लन राइस, शुड वी हैव नॉट टेम्प्टेड वेस्ट हैम फॉर डेक्लन राइस? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट यार, इंस्टेड ऑफ डियोंग? मैं तो खुद डियोंग चाहता हूँ, बीइंग अ डच फैन, यू नो आई वांट अ डच प्लेयर फाइनली बैक इन चेल्सी स्टार्टिंग 11. लेकिन भाई डेक्लन राइस और 20 मिलियन डालकर आप डेक्लन राइस को ले आओ, 20-25 बोल दो. मतलब आई एम जस्ट सेइंग, रादर देन फोफाना एंड डियोंग, डेक्लन राइस कैन आल्सो प्ले बोथ द पोजीशंस. Just saying it out there. I know different है. Declan Rice is not really such a good box to box. He's more of a core number 6 जो खेल सकते हैं सेंटर हाफ एट बेस्ट, लेकिन डियोंग इज बेटर, आई एम नॉट सेइंग दैट. लेकिन हाँ, इन टर्म्स ऑफ प्रीमियर लीग आई थिंक डेक्लन राइस इज प्रॉब्ली बेटर नाउ. नहीं, ओके. फ्रैंकी डियोंग saga is drag too, Sej बोल रहे. Problem is there are a few finished products, so they're going for millions. I don't know why, but in my opinion, Frenkie is one of the most overrated player ever. Even Nico Barrea is much better. Oh, ये थोड़ा सा far fetched है जेस के. Nico Barrea has a lot of mistakes in him, I would say. लेकिन even he is a very good player. बहुत अच्छा player है. एक दोनों ही they have a higher ceiling. दोनों they're not. अरे गोल होने वाला यार, वो हो गया गोल. अरे बचा दिया यार. ओ sorry. What a goal line clearance, man. This was almost a Nathan Aki moment. Oh, man. What was that? Valverde opening up the defense of Frankfurt. Benzema playing it sidewards. और आए भाई, टूटे नहीं भाई, टूटा with a goal line clearance. Vinicius Junior couldn't score, man. Brilliant. It was kind of lucky also, but I think it deserves the luck. टूटा corner हो गया. Madrid might go for Bellingham too. यार Chelsea Liverpool भी लाइन में. Just saying. Okay, the snake bit Kamada. Oh my god, nice one. अरे Mendy and Militao. अरे भाई हम बैंटर करते हैं यार, मस्ती मस्ती में थोड़ा चैनल में. Beat part and parcel. Mendy and Militao. Madrid has 0% to get Bellingham. English never prefer La Liga over Premier League. ऐसा कुछ नहीं है. I think times have changed यार. With Italy it's showing, तो हो सकता है they might. You never know. हुआ था एक समय पे माइकल ओवन एंड डेविड बेकहम वर बोथ देयर. मतलब स्टीव मैकमैनमन, फाइनली मैंने सही बोला यार नाम, वो ही वाज आल्सो देयर राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन मैड्रिड. सर काफी लोग थे यार मैड्रिड में. Bernardo, if he stays at City this season, will not get much chance this season. That I disagree, but he has to be mentally there fully. Even last season वो था ना, he became one of the players of the season in many people's eyes. Bernardo Silva आज के दिन में on form, he is one of the top 3 midfielders in the world.
I have no qualms about saying that. तो अगर बार्सिलोना जाते हैं फॉर 55 to 60 मिलियन, भाई बार्सिलोना एब्सोल्यूट फेवरेट्स एटलीस्ट फॉर द ला लीगा, वो तो ऑलरेडी है मेरे ख्याल से. बट यार कमाडा यार करना था स्कोर, लेकिन फेयर एनफ यार, विनिशियस का भी अच्छा चांस था भाई. काफी एंड टू एंड गेम हो रहा है अभी तक. आई होप पेनल्टीज में नहीं जाए यार, बस नो एक्स्ट्रा टाइम इन पेनल्टीज. आई जस्ट होप यार. एज इट इज मेरी तबीयत 100% नहीं है और काफी स्ट्रीम करना है यार अभी इस हफ्ते. चलो, द प्रॉब्लम इज ऑल द प्लेयर्स वी साइंड और हाईजैक दिस सीजन, देयर कंबाइंड सैलरी इज स्टिल लेस देन द सैलरी फ्रैंकी विल बी गेटिंग नेक्स्ट सीजन. वाओ, दैट्स द प्रॉब्लम. इज दैट ट्रू? दैट्स टू मच यार. मेंडी गेटिंग बुलीड बाय फ्रैंकफर्ट. आएगा यार, रोडिगर आएगा, टेंशन नहीं है. थैंक यू आशीष. अगेन, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम. ऑफ कोर्स सब्सक्राइब भी करिए अगर आप आपने नहीं किया तो. डजंट टेक अ बक, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. लाइक, सब्सक्राइब. यस, वी आर मोनेटाइज. आपको लगता है कि यार वी डिजर्व अ सुपर चैट, डेफिनेटली गो फॉर इट. बट अगर आपको लगता नहीं है तो fair enough, you can also go for a membership on Almighty Blues FC. भाई Carvajal plays a nice through ball, but nice interception by Indica. Indica यार काफी अच्छे डिफेंडर है by the way. Big up to David Antar Sports, bro. How are you? Frankfurt can't be missing these chances. Madrid will just need one chance to. Yeah, they got one chance and they had a good defense, luckily by Tuta. By Frankfurt का man marking देखो यार. फ्रैंकफर्ट ना प्रेसिंग मैन मार्किंग इज अ गेम, डेफिनेटली शायद दोनों है करते हैं प्रॉपर. तो लेट्स सी हाउ इट गोज, वेदर दे कैन सस्टेन इट, क्योंकि रियल मैड्रिड वी ऑल नो हाउ दे आर, यू नो. आई वुड प्रेफर राइस एंड फ्रेड, देन वी विल हैव फ्राइड राइस. यार इसके लिए ना तालियां बनती है, क्या बोलते हो यार? अच्छा, मुझे छींक आ रही है पीपल. सॉरी अबाउट दैट. लाइव में छींका नहीं मैंने कभी. इतने 1.5 साल में. कोई नहीं, वी नीड बोथ. ओके, नाइस. शिफ्ट इज लाइक एक काफी नहीं, दोनों चाहिए. भाई व्हाट अ सेव. बिल्कुल टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि जुड़ नहीं पाया. ओह माय गॉड, ब्रिलियंट. भाई फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग मॉडरेट कांट फाइंड स्पेसेस. नहीं यार, शुरुआत है गेम का, वेदर दे कैन सस्टेन, लेट्स सी. टॉप 5 प्रीमियरशिप, ही शुड बी वैल्यूड 100 मिलियन. हाँ, और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी 1 साल का नहीं है यार. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना 3 साल बाकी है कॉन्ट्रैक्ट बर्नार्डो सिल्वा का. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग पीपल. Hope Man City goes for Declan Rice next season. At least he won't complain about weather in Manchester. We were linked with Mendy and Militao. What was Tuchel thinking? Yaar, tell me about this, Farhan. Darren, Farhan, all the Chelsea fans. Adway. भाई सब लोग ये बताइए मुझे. Is it a real thing? Tuchel going for Aubameyang? Yes, he is one striker जो खेले उनके अंडर काफी अच्छा किए in the past. I agree. But who's had attitude issues at Arsenal? Who's not playing every game for Barca? Over Ronaldo? Let me know what's the logic. आ गया यार, इसका वेट था. Sorry, excuse me people. That is what I was waiting for. I was waiting for a sneeze. I hope it's a lucky sneeze for Frankfurt or Real Madrid fans. Let's put it that way. अरे क्यों यार, शायद एंचेलोटी अच्छा है यार, ऐसा मत बोलिए. लेकिन अगेन लिवरपूल फैंस आई नो. कोई नहीं यार, विल टेक दैट. रूमर्स आर देयर फ्रैंकी डजंट वांट टू जॉइन यूनाइटेड बिकॉज़ ऑफ हैविंग फियर टू compete with McTominay. वो तो ये है यार अपने राबियो. अगेन सॉरी पीपल, आई नो आई एम स्नीजिंग लाइव, बट इट इज व्हाट इट इज यार. रोटी कपड़ा मकान के लिए करना पड़ता है लाइव स्ट्रीम, क्या बोलते हो? If Casemiro misses the ball, second thing is tackle and give free kick. What about referee यार? रेफरी को भी टैकल कर लेंगे वो तो. About Silva, even if Pep let him leave, but Tixiki will never let him go less than 80 million. ये कौन है? Tixiki कौन है यार? ये बोले. ये ओबा क्या है? आई एम टायर्ड प्लेइंग 5-5-0 फॉर्मेशन. ओह माय गॉड, 5-5-0 यार. ओबामेयांग ना थोड़ा सा लेफ्ट स्पेसेस फाइंड करते हैं. ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर और ही इज अ बेटर फिनिशर देन व्हाट वी हैव. ही इज अ डेफिनेट अपग्रेड जो हमारे है, बट प्रॉब्लम है यार 6 महीने बाद में यू आर बाइंग हिम फ्रॉम बारसा. मतलब व्हाट लेवल ऑफ कमिटमेंट आर यू आस्किंग फ्रॉम हिम? आप देखिए, मतलब अगेन ही इज नॉट अ वेरी यंगिश प्लेयर एज वेल. तो डिपाई के लिए क्यों नहीं जा रहे यार चेल्सी? मतलब वी डोंट सीम्स क्वालिटी अवार्ड. डच प्लेयर्स के साथ क्या तो है यार चेल्सी का. खत्म करिए यार डील. यूवेंटस आर ऑलरेडी गॉन, आई नो.
But it is what is this? Sneezing and penalty can't be avoided. यार 6-1 ना बायर्न म्यूनिख के साथ ही. बायर्न म्यूनिख इज अ डिफरेंट नो बीस्ट यार. मतलब अगेन पीपल जस्ट टू लेट यू नो, रियल मैड्रिड का खाली फोर्थ मैच है ये प्री सीजन में. यस, इफ यू आर काउंटिंग दिस प्री सीजन, जो है नहीं, लेकिन दे हैव जस्ट प्लेड 3 मैचेस इन प्री सीजन, तो यू हैव टू गिव इट टू देम, राइट. फ्रैंकफर्ट ऑन द अदर हैंड प्लेड अ लॉट ऑफ मैचेस. कमाड़ा नाइस प्ले यार. चलो पास. कमाड़ा द मेन गाय. मैं बोला भी था यार प्रीव्यू में, अरे यार व्हाट डिफेंसिव प्ले बाय मिलिटाओ यार. दैट वाज वेरी गुड बाय मिलिटाओ. मिलिटाओ ने बचा लिया लेफ्ट विंग, नहीं तो अरे यार डिब्रोयना मोमेंट लग रहा था मुझे जो किया था कांटे के साथ. और ये कोटवा का बढ़िया सेव एक और ऑन द राइट हैंड पोस्ट. कोटवा यार, कोटवा इज लिविंग अप टू द बिलिंग. ही हैड अ फैंटास्टिक ईयर यार लास्ट ईयर. हाँ यार, थैंक यू थैंक यू. अंकित भैया रेस्ट ले लो थोड़ा आप, ये मंथ हेक्टिक जाने वाला है बोथ इन फुटबॉल एंड क्रिकेट. यार कोई नहीं यार, अपना थर्मस जिंदाबाद. एवरीथिंग विल बी फाइन यार. सुबह सुबह तक ठीक हो जाएगा सब, टेंशन नहीं है. मतलब आई एम ओके, जस्ट अ बिट कोल्ड. वो यार वेदर भी चेंज हो रहा है ना बैंगलोर में. इट्स क्रेजीली इट वाज रेनिंग भाई लास्ट फ्यू डेज में. मतलब बहुत ही ज्यादा. मतलब द लॉजिक इज सिंपल. प्रीमियर लीग का गेम ओबा समझता है. और या दैट्स अ गुड पॉइंट आशीष, बहुत अच्छा पॉइंट है आपका. क्योंकि वो फैक्ट इज ही नोज लंदन, ही नोज प्रीमियर लीग गेम एंड काफी. आई नो ही इज नॉट अप टू द ट्रीज इन प्रीमियर लीग सच में बोलूं तो फॉर आर्सेनल, लेकिन एटलीस्ट ही इज डन डिसेंटली वेल इन स्पेल्स. और अगेन he is an upgrade to Timo Werner. सच में बोल रहा हूँ, he is an upgrade to Timo Werner in my opinion. हाँ, he cannot do the same things. Timo Werner all the best, but he cannot make the runs etc. जो Timo Werner करते, he could have maybe 2 साल पहले. लेकिन आज के दिन में he is a better finisher. That's what हमें चाहिए अभी. Yeah, all good. Don't worry about it. It's just a couple of sneezes, nothing else. कोटवा का क्या है, हर शॉट सेव कर रहा है भाई. कोटवा ऑन फॉर्म इज द बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड, एज मच एज आई डू नॉट लाइक सेइंग इट. और व्हाट अबाउट कोटवा यार, कोटवा ने अच्छे चीज बोले हैं अबाउट चेल्सी इन द लास्ट डे और टू. उन्होंने बोला है भाई, आई होप द न्यू ओनर्स अंडरस्टैंड चेल्सी एंड गेट द क्लब टू द हाइट्स दैट दे डिजर्व, दैट दे वर फॉर सो मेनी डेकेड्स. उन्होंने बोला है कोटवा ने. पता नहीं पीआर स्टंट, आई डोंट नो. लेट्स सी. अंकित भैया कोटवा का क्या ही क्या क्या खाता. You know what? I think Courtois, in my opinion, can be beaten. There's a way. Or the fact is, वो इतना dependent on his left foot है ना, he can be targeted as a goalkeeper. You just need to know his weaknesses. एक विंगर आएगा, आई फील अद्वै बोल रहे हैं. हाँ, आना भी चाहिए यार, स्पेशली अगर जीएश भी जाते हैं ना. कम ऑन, पुलिसिक जो आधा समय रहते नहीं है, इंजर्ड रहते हैं, तो विंगर प्रॉपर है कौन यार अपना. यस, वी मे नॉट प्ले द सिस्टम, बट हमें चाहिए ऑप्शन टू चेंज सिस्टम्स इन बिटवीन द मैचेस, राइट. तो एक्सेप्ट फॉर पुलिसिक विल नॉट हैव अ प्रॉपर विंगर, नॉट अ प्रॉपर विंगर एट ऑल. नहीं यार, किड्स तो नहीं है जेएसके. थैंक्स फॉर आस्किंग. या आई नो दैट बिल्कुल बिल्कुल. आई एम इनसाइड ओनली. ओके यार, कल मुझे थोड़ा सा काम है यार एमजी रोड पे. पता नहीं शायद आप कहाँ रहते हो, डीएम कर यार. विल कैच अप सम टाइम. the way man, P Courtois normal Neuer. ओके, आई गेट इट आई गेट इट. ट्रैप के लिए दुख होता है पीएसजी से. अरे ट्रैप यार, पीएसजी यार गोलकीपर्स का करियर बंद कर दिया. ट्रैप हो गया, एरियोला हो गया, मार्सिन बुल्का हो गया, चेल्सी यंगस्टर वहां गए थे. देन ऑफ कोर्स का केलोर नवास हो गया. भाई काफी लोग हैं यार. क्या मैं बोलूंगा भाई. केलोर नवास ही डिजर्व्ड मच. ओ दैट्स अ बैड हेडबट हो गया यार, लेकिन बुरा लगा आई थिंक फ्रैंकफर्ट प्लेयर को. भाई हेडबट नहीं, लेकिन हेड क्लैश हो गया. कॉर्नर में गो इन टॉप 3 में बी. ओके यार, आई होप कॉर्नर गैलेगर गोज देयर. अदवे आई थिंक दैट्स हिज बेस्ट पोजीशन. भाई बोली डिपाई पे कॉन्सेंट्रेट करता तो ये नहीं होता यार. मुझे लगता है ना डिपाई चाहिए नहीं था बोली और टुकल को. मतलब दैट इज अ क्लियर थिंग, क्योंकि डिपाई वाज अवेलेबल ऑन अ फ्री. पता नहीं यार. और मे बी बोली सोच रहे भाई क्यों फ्री में जाना छोड़ रहे, जाना अलाउ कर रहे. मे बी इज नॉट टू गुड. जस्ट पुट इट दैट वे, राइट. टू मच.
Adway with a sense of humor. And yes, people, again, do not forget to like the stream and share भी कर दीजिए. Man, goal हो जाए यार. I don't want to go to extra time. Don't tell me यार, मैं कभी stream end नहीं किया हूँ before time. तो hopefully यार, we get some goals because I really don't want to go to extra time considering my health situation. But again, thanks यार, जो भी बना है आया है, thanks a lot. And yes, by chance आपने miss किया हो, वो एक battle था between Drog Baba and Indie Cop. यार, big up उनको. We had a great contest, and just for the knowledge as well, go and check it out, people. Almighty Blues FC में काफी लोग ने मिस किया था. I didn't expect them to miss for such a great contest, but generally as well, who am I? But हाँ, जो भी नहीं मिस किया भाई, definitely check it out first thing in the morning or tonight, because that was something else, you know. Uh, okay, I wasn't expecting this from Frankfurt. After what Bayern written, that match killed my excitement. You know what? Frankfurt in a European Cup game is a different gravy. बोले इट्स नॉट जस्ट आज का, या आप बोलोगे यू नो 3 years बैक व्हेन दे प्लेड चेल्सी, चेल्सी को एक बहुत बड़ा स्केयर दिया था. हाँ, उस समय आई थिंक लुका जोविक वाज इज फ्रैंकफर्ट, जहां तक मुझे याद है. दे हैड ऑब्वियसली कॉस्टिच ओवर द इयर्स. फिर भी आई थिंक मोर अबाउट द इंडिविजुअल प्लेयर्स, इट इज देयर टीम. और उनका जो कोच है ब्रिलियंट है भाई. यहाँ पर लग रहा है मुझे फ्री किक मिलेगा, क्लियर पुल बैक था लेकिन नहीं दिया यार रेफरी ने. ओ मैन. Okay, when Timo praises Chelsea, I say उल्टा चोर कोतवा को. नाइस वन. करंटली ओके, चलो चलो. बहुत दूर है यार आपका शायद. कोई नहीं. मैं नॉर्थ बैंगलोर में रहता हूँ, जस्ट सो यू नो. नॉट गोइंग फॉर जेसूस वाज मिस्टेक आई थिंक. आई डोंट थिंक जेसूस और स्टर्लिंग को देते एनीवे. आई डोंट थिंक. यू डू मीन रियल मैड्रिड और चेल्सी, जेएसके आप बोलिए. आई थिंक if I'm not wrong, Man City don't look at Arsenal as a title competitor. ठीक है, प्लस आर्टेटा रिलेशंस रिमेंबर, तो वहां पर यूज हुआ है ना. थोड़ा वन साइड विक्ट्री था फॉर चेल्सी. ड्रॉग बाबा ने लास्ट ईयर का रिवेंज लिया. अरे don't, no spoilers Sanjeev, no spoilers, people have not watched it. But like I said, it's not about the winning or losing, it's about just the game. I think people have enjoyed it, so people go and enjoy it. Delhi aate yaar, matlab maine just like I said, I've not even taken a break from last 1.5 years. I need to take one. I definitely deserve one. The idea is यार हो जाए, हम इतना ग्रो हो जाए कि यार हम we can delegate, we can recruit people, वो हो जाए तो that is what the idea is. Hopefully we can, we will someday यार. Certainly यार, इस साल ही hopefully, with all your love, right? Okay. Mitrovic wants to play for India after Modi said Mitro. अदवे मैम मुझे जगा के रखे. थैंक यू अदवे, क्या बोल रहा हूँ, और बाकी लोगों को भी एब्सोल्युटली. अच्छा, चेल्सी के लिए वही यार, जेएसके. आई डोंट थिंक मैन सिटी बेचती बोथ स्टर्लिंग एंड जेसूस टू चेल्सी, बिकॉज चेल्सी यार कैन compete on their good year, they are still better than Arsenal as a football club over the last decade and a half, right? I would say absolutely, and more if in fact. Frankfurt look blunt in attack. The final third remains okay. Reminds me of a team I follow. Mikhail is saying, man, it's Frankfurt is looking like a Chelsea. Mikhail, if you remember, was it Sari season of Europa League where Frankfurt gave us a scare? And I think it was, if I'm not wrong, it was Kepa who saved us in the end. That was what it was, right? But I think Frankfurt do have that kind of element. Yeah, they have a lot of good players. They have a good teamwork, good coach, good setup. Problem is that not enough finishers, or even the defenders. I think as much as they have looked solid, like you saw, जहाँ पर free kick नहीं मिला ना Real Madrid को, they have some defensive mistakes in them, clear mistakes. वही है difference, that quality. बिल्कुल. ओ वहां पर नहीं है यार, लेकिन शायद when my friend told me about Nathan Aki, I said वो आके तो गया था ना. Oh my god. मैन अदवे भाई, आपको एक बुक लिखना चाहिए यार प्रॉपर, मैं बोल रहा हूँ आपको. Certainly. Do you write? Advay, asking you. By the way, Advay used to come on streams also for people who don't know यार. आप हम लोग करते थे ओपन स्ट्रीम, सब लोग को याद होगा क्या हुआ उसका नतीजा फाइनली. लेकिन कोई नहीं, we'll someday again have Advay in the future. Do you think Frankfurt is a good cup winning team then? Uh, yeah, you can say that. But at the same time, this is the first Super Cup. They won the first Europa League.
So ऐसा नहीं बोलूंगा they're a cup winning team, but they are generally a side which press very well, they counter very well, they do man marking. तो वही थोड़ा tournament football के लिए those things work better in my opinion. In a league where there are what 35 to 40 games, it may not work. You know, you need real mentality to continue that. जो Liverpool unfortunately for as a Chelsea fan कर रही है, but for Syed and Liverpool fans it's good. Uh, okay, I was on stream when that happened. Yes, Adway, I remember that. बिल्कुल यार. कोई नहीं. I hope it doesn't happen to any creator again. That's what I can hope for. I think looking at performance of first 30 minutes, Bayern fans would be happy more than Frankfurt fans. Oh yes, man. I think Nagelsmann की rating बढ़ गई यार इस 30 minutes के बाद. लेकिन like again I'm saying, don't read too much into it. Remember, Real Madrid are a second half team anyway in European football. Plus, the fact is, what a run, man. What a run. अरे भाई साहब, what a run. ये कहाँ जा रहे हैं भाई? कौन है ये? Was it Modric? What a run was that? Valverde. Man, Valverde is like, oh, बैटरी पे चलते हैं यार Valverde. Jet, turbo. लेकिन यार फोर्थ ही मैच है रियल का, तो दैट इज मे बी वन रीजन व्हाई दे आर स्लो स्टार्टर्स. कारवाल भाई ऑस्कर देना पड़ेगा, टच भी नहीं. Not sure what you're saying, Syed. I didn't get that. Sorry about that. They don't choke like Indian cricket team. Yeah, बिल्कुल यार. Telling Bayern fans not to believe in their manager since season. Oh man. Oh भाई साहब, अदवे मैन कहाँ से लाते हो यार ढूंढ के सब. चलो कोई नहीं यार, 35 मिनट्स इन. अभी लग रहा है यार अगर कोई टीम स्कोर करेगी मे बी दैट्स फ्रैंकफर्ट. फ्रैंकफर्ट इज लुकिंग द फेवरेट टू स्कोर. क्या बोलते हो? लेकिन हाँ, आई विश as basically someone who doesn't want to wake up very long that yes, definitely I love to watch this match. It comes once in a year, yeah, Super Cup. Lekin at the same time, man, there's too much going on. Okay, that's what शायद बोलना चाह रहे थे. कोई नहीं. In terms of Madrid, लक बोलो नहीं यार. आई वाज थिंकिंग लक मे बी पीएसजी गेम में, फिर आई चेल्सी, फिर आई मैन सिटी. उतना नहीं. इवन इन द लीग भाई, सेविया के साथ आपको याद है टुवर्ड्स एंड ऑफ द सीजन क्या कमबैक किया था. कारवाहाल प्लेइंग सेंटर हाफ, कारवाहाल प्लेइंग लेफ्ट बैक, गेटिंग एन असिस्ट. You have to give it to Ancelotti here after losing that El Clasico game 4-0. He really pulled up Real Madrid socks यार. मैं बोलना चाहूंगा यार यहाँ पर, as much as मैं तो चाहूंगा यार definitely for them not to break all the records or Chelsea in the future get to this 5 Super Cups as well. लेकिन हाँ, मेरी एक क्लब तो मिलान है 5 Super Cups में, just saying. They might equal today. Let's see. Oh man, nice one. यार मैं भी वहीं से था यार, इंजीनियरिंग का ही हूँ मैं भी प्रोडक्ट. अरे गोल हो गया. और नहीं यार, विनिशियस, व्हाट अ ब्रिलियंट कॉर्नर यार. कॉर्नर हुआ भाई, केविन ट्रैप ने शायद गॉट अ टच मैन. भाई विनिशियस जूनियर, दैट वही है मोमेंट्स एफसी है रियल मैड्रिड. बिल्कुल. देखो लिवरपूल फैन के साथ आया है, तो लिवरपूल फैन टेलिंग अबाउट इट, यू हैव टू रेस्पेक्ट इट बिकॉज उन्होंने जीता था. लिवरपूल भी मैं मिस कर दिया ऑब्वियसली इन द फाइनल. क्लॉप जावी को कॉपी करके ग्रास कटर के जगह ग्रास ड्रायर बन गया. अरे नहीं यार, आई डिसएग्री वहां पर. अरे गोल हो गया. चलो यार गोल. Real Madrid fans, congratulations. That was a training ground routine. What a brilliant set piece. Brilliant set piece. मैं बोलता हूँ. और अलाबा tapped it in. पिंग पोंग खेले थे बॉक्स में. दैट इज व्हाट मैं बोलता हूँ. फ्रैंकफर्ट हैव मिस्टेक्स इन देम, दे हैव डिफेंसिव मिस्टेक्स इन देम, और दे आर नॉट वेरी गुड फिनिशर्स. और यही एक्लीज हील, जैसे मिकाइल बोल रहे थे चैट में, दैट इट इज बेसिकली चेल्सी की एक्लीज हील. नॉट एट दैट लेवल, लेकिन भाई व्हाट अ हेडर फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजिमा ने जीता है भाई. बेंजिमा ओपी इन द चैट बार. व्हाट अ हेडर मैन. दो फ्रैंकफर्ट डिफेंडर्स वर अगेंस्ट बेंजिमा, फिर भी उन्होंने टच लिया एंड इट वेंट टू बेसिकली कैसेमीरो who would cut it back from his header और आए भाई टैप इन के लिए अलाबा सेंटर बैक. इसीलिए you have to give it to Carlo Ancelotti. He started Mr. Alaba as center back. Alaba, yeah, बिल्कुल. भाई I would say Benzema, what a superb header.
बिल्कुल, बिल्कुल, एंड दैट्स वर्ल्ड क्लास ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. मतलब आई रिमेंबर ड्रॉगबा डेज, आई रिमेंबर वैसा होता था भाई ड्रॉगबा. मतलब डिफेंडर्स, 2-3 डिफेंडर्स उसके पास में रहते थे, फिर भी ड्रॉगबा शुड इन द हेडर. दैट इज व्हाट उन्होंने किया भाई. मतलब आई नेवर इमेजिन बेंजेमा वुड बी सो स्ट्रांग. ही वाज ऑलवेज स्किलफुल, ही वाज ऑलवेज गुड मूवमेंट वाला भाई. नाइस चांस बाय फ्रैंकफर्ट ऑफ द लेफ्ट विंग, लेकिन नहीं. एज आई सेड, दे डोंट फिनिश वेल. And now Kamara is regretting. Kamada, yeah, Kamada is regretting definitely. Yeah, I think Kamada, for me, is a very good player. लेकिन again, is he a finished article? No, I don't think so. नहीं पर है. और भाई रियल मैड्रिड कर लो भाई, मैं तो बोलता हूँ. फ्रैंकफर्ट, सॉरी यार, फ्रैंकफर्ट फैंस, सॉरी जर्मन फैंस. और वापस से आई थिंक मुदित आज बिजी है. जर्मन फुटबॉल फैन का नाम लिया तो याद आ गया मुझे मुदित. डेफिनेटली ही आल्सो वांटेड अमंग अ कपल ऑफ अदर्स इन द चैट वांटिंग फ्रैंकफर्ट टू विन. बट क्या है तो मैं बोलूँ, आई डोंट थिंक फ्रैंकफर्ट कैन फिनिश एंड डिफेंड सो वेल. वामोस, होप बेंजेमा डोंट गेट हिज बैलन डोर रॉब्ड इफ. नहीं यार, मुझे लगता है इस बार तो बेंजेमा का ही होगा यार. मतलब कम ऑन, दैट बी रियल रॉबरी यार. एज मच एज मेसी इज अ गोट, रोनाल्डो इज अ गोट, कम ऑन मैन, लेट्स बी ऑनेस्ट. लेवेंडोव्स्की उस साल यार कोविड का साल था और नेक्स्ट साल इतना अच्छा नहीं किया था. सो यू कैन स्टिल आर्ग्यू, बट बेंजेमा का हम आर्ग्यू नहीं कर पाएंगे. आई डोंट थिंक. और टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप ईयर्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जेएसके 2014 में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसने जीता था बैलन डोर वहां पर? क्या बोलोगे, रिबेरी रॉबिन नहीं थे फेवरेट्स? मतलब देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स लाइक दैट, राइट? सो समटाइम्स यू गिव इट टू द क्लब अचीवर एज वेल, क्योंकि इतना कंसिस्टेंटली किया ना. बट आई नो वर्ल्ड कप यार, eyes will be on Messi for sure and on Ronaldo is sure. Javi burning his Mercedes Benz to avoid sleepless night. Even I'm German fan. Oh man, Andre Schürrle, I love the guy यार, superb. मतलब very very unfortunate था the way he left Chelsea, because हमने साइन किया था, if I'm not wrong, was it ये क्या नाम है यार इसका? Don't tell me my memory is gone now. Along with my voice today. But Cuadrado, अबे भैया याद आ गया, Cuadrado साइन किया था हमने. Cuadrado was supposed to be the next big thing in Europe, लेकिन he didn't live up to his expectations, और Shirley was let go, but he was given a winner's medal by Jose Mourinho. यार, respect to Jose Mourinho for that. Goalie should have cleared the ball. Casemiro headed back. Oh yes, I think that's a good point. Absolutely. Like, I think Kevin Trapp was trapped. Oh, what a miss. Very difficult volley, but Benzema standards के लिए I think that was basically a pretty much doable half volley. I think ये लूज किया पोजीशन फ्रैंकफर्ट ने, वाल्वर्डे ने वापस पास किया था, और वहां पे राइट विंग में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाज इट क्रूज, और क्रूज दिए थे बेंजेमा को ऑन हाफ वॉली, हु जस्ट स्टक इट वाइड. You know what, Mikhail? The problem was they were like literally playing ping pong. First of all, the defender should have cleared. Benzema shouldn't have got the header. Then Casemiro getting the header in, probably yes, maybe the defenders and goalie thought that it's out. Lekin Casemiro kept it in play. Uh, they made a mistake there. In that 1 second, everything went, and of course, no one marking Alaba. मैचअप प्लेयर जिन्होंने एज के साथ भी अमेजिंग स्किल्स दिखाए वो है रॉबिन और रिबेरी. अरे भाई रॉबिन यार, मैं माई ऑल टाइम बेस्ट फेवरेट यार, क्या बोलूँ मैं. मतलब आई कुड नॉट इवन स्टॉप वाचिंग रॉबिन. ऑफ कोर्स नॉट अगेंस्ट चेल्सी, बट अदरवाइज. Oh, what a brilliant shot, man. Madrid are coming to form now, looks like. यार मैं तो बोलता हूँ रियल मैड्रिड जीतेगी 75%. आई एम गिविंग 25% टू फ्रैंकफर्ट बिकॉज इट्स स्टिल 1-0. दैट्स द ओनली रीजन. एंड टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट 30 मिनट्स में आर्ग्यूबली फ्रैंकफर्ट वाज द बेटर टीम. यू कैन आर्ग्यू दैट, ठीक है. लेकिन हाँ, मैड्रिड आर कमिंग टू फॉर्म, वही है, दिखता है. क्लोजर टू सेकंड हाफ दे अप देयर गियर, दिख रहा है. या बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ ना, रोनाल्डो क्यों जीता था याद करिए, नॉट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड कप, राइट. भाई विनी जूनियर को असिस्ट करता बेंजी तो सही होता. आई डोंट नो यार, मतलब आई थिंक शॉट था उसके लिए, इट वाज स्ट्रेट. अगेन दे आर शोइंग द रिप्ले नाउ. बहुत ही अच्छा टेक्निक था यार इनफैक्ट, और इनफैक्ट वो भी ही हिट द बॉल वाइड, वाइड ऑफ द लेफ्ट फुट. तो विनीशियस जूनियर और भी लेफ्ट और भी वाइड था. तो आई थिंक you can argue it was probably there for the taking. Kafu versus Lam, who was better? Okay, if I have to be a coach, okay, I'll pick Lam, because
Lam could do multiple things on the pitch. Tactically, एक substitution बचाते थे almost in the middle of the game, and quality maybe he was good almost in all positions. ठीक है, लेकिन if I am being a fan, 100% मैं काफू के लिए जाऊंगा यार, because काफू on the eye was something else. काफू was the eye was something else. I remember those days, yeah, those dotting runs जो होते थे ना, wow, as in that was superb. Once goalie leaves line, he must clear. Yeah, Mikhail has a brilliant point here, as always. I think that's a point noted, Mikhail, bro, definitely. Because yes, the decision making sometimes of goalkeepers has to be questioned when they are leaving the line. Uh, and again, you have to give credit to Benzema there. I think Benzema ne pura gameplay change कर getting that header of two defenders. Man, I remember Drogba for that second year. I must say, Mikhail, bro. आउटसाइड द बॉक्स बेस्ट शॉट देखना है रियल मैड्रिड में तो क्रूस और मॉडरिच, या क्रूस भी अच्छा मारते हैं बहुत, मॉडरिच तो यार एज मतलब इवन इन हिज फर्स्ट डेज as much as I don't like saying it, यार he was always a good shot taker. फिलिप लाम गोट राइट बैक, यार ओवरऑल फिलिप लाम आई वुड से, लेकिन हाँ जस्ट अगर मुझे देखने जाना है ना, मैं काफू को देखने जाऊंगा ज्यादा, जस्ट अबाउट राइट. अगेन मैं बोलूंगा फिलिप लाम है, काफू है राइट बैक्स में, गोटेड राइट बैक्स. आई वुड ऑल्सो से लॉट ऑफ राइट बैक्स है यार, मतलब इनफैक्ट आई थिंक मिलान में जनरली, इंटर मिलान में भी काफी राइट बैक्स आए हैं यार, मतलब बार्सिलोना में जैम्ब्रोटा ही कुड प्ले बेसिकली राइट बैक लेफ्ट बैक, लॉट ऑफ ऑप्शंस थे वहां पर. चेल्सी में ब्रानिस्लाव इवानोविच, आई थिंक आर्ग्यूबली इन हिज प्राइम ब्रानिस्लाव इवानोविच वाज अनप्लेएबल यार, मतलब दैट स्ट्रेंथ एट राइट बैक, वाओ. Talk about Drogba. He was Drogba of right backs for me, in terms of strength at least, and headers, And free kicks, अब real, yeah, नहीं park the bus तो नहीं करेगी. I don't think there's a need to park the bus. Come on. हाँ, until half time you can say that. यार lead रखो और then come back. That's what I would say, definitely. Best player who can goal today वैसे, अरे यार thank you यार, thank you. रियल मैड्रिड बेस्ट प्लेयर है करीम बेंजेमा, 100% मैं बोलता हूँ, ही इज अ डिफरेंट एलिमेंट ऑल टुगेदर. साइन वन लेजेंड पास्ट हु विल बी रोनाल्डिनो और लैम्पार्ड. यार मेरी टीम क्या है यार, टीम को क्या जरूरत है उस पर निर्भर है ना. मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू स्टे ऑन द फेंस, संजीव, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट व्हाई वुड यू साइन अ रोनाल्डिनो व्हेन यू नीड अ लैम्पार्ड इन योर टीम? आई एम जस्ट पुटिंग अ सिनेरियो, राइट? तो अब मुझे सिनेरियो दीजिए पूरा, फिर मैं मुझे बोलिए. और अगेन दैट्स व्हाई यू कैन नॉट कंपेयर द टू, बिकॉज वन वाज अ सेंट्रल मिडफील्डर स्लैश सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर, and one was a left central attacking midfielder slash left winger or left forward. So there's a huge difference between the two. No problem. Big up, bro. We'll meet soon. Hopefully, yeah. Yeah. Of course, you can always tune in. Of course, let me know if you're free to jump on. Yeah, you're always welcome on the panel as well. You know that, Mikhail. Again, almighty coach, but not just that. He's been with the channel from when we were 300 subscribers. And that's the support that I'm really wanting from others as well. Not wanting, but I think अगर मिले तो बहुत अच्छा है. अरे हाफ टाइम हो गया यार यहाँ पर. चलो, रियल मैड्रिड 1-0. क्या बोलोगे? हाफ टाइम की क्या एनालिसिस करें भाई? यहां पर देखिए तो यार, फ्रैंकफर्ट मिसिंग चांसेस हैज टू बी द ऑर्डर ऑफ द डे. आई थिंक लेफ्ट विंग से कॉस्टिच इज मिसिंग, लेकिन फिर भी दे वर एबल टू क्रिएट अ लॉट मोर, एंड नॉट जस्ट प्रेसिंग, मैन मार्किंग. दे केप्ट एक्चुअली पोजीशन, दे प्लेड अ लॉट ऑफ पोजीशन बेस्ड फुटबॉल जो लिवरपूल दिखाई थी अगेंस्ट रियल मैड्रिड. बट वही है, मैड्रिड बीइंग मैड्रिड, they've taken advantage of Kamada missing. Yes, Vinicius Junior should have probably scored a goal as well, लेकिन you have to give it to Tuta there. बहुत ही अच्छा गोल लाइन क्लियरेंस. कोटवा ने बहुत अच्छे सेव्स मारे, दो, लेकिन ओवरऑल मैं बोलूंगा भाई, दैट मोमेंट वेयर बेंजेमा ने हेड किया, वाओ वाओ, जस्ट वाओ. और कैसेमिरो केप्ट इट इन. यस, जैसे मैकाइल ने बोला है, देयर वाज अ मिस्टेक बाय द कीपर, देयर वाज अ मिस्टेक बाय द डिफेंडर नॉट मार्किंग अलाबा एज वेल, लेकिन इट वाज क्लियर दैट once Benzema ने जीत लिया header, that was a total surprise. They didn't expect that with two defenders being there. They should plan better. There's a mistake in Frankfurt. That's why I was always saying, right? Real doesn't have bus. Benz carries them to the stadium. Frankfurt, oh mine. Oh, nice one. चलो यार, यहाँ पर बैक टू द ट्रांसफर न्यूज थोड़ा सा आ जाते हैं. क्या बोलते हो पीपल? कुछ आया है लास्ट आधी घंटा में? कुछ आया तो बता दीजिए यार, ट्रांसफर न्यूज. लेट मी नो इन द चैट अगर कुछ आया तो. अगेन थैंक्स अ लॉट भाई, जो भी लोग जुड़े हुए. अगेन आपका कोई बनता नहीं है जुड़ना, लेकिन आप लोग जुड़े हुए बिकॉज
you believe in me, I'm guessing, and you guys like it when I discuss with you. Simple as that. Yes, I hope that remaining 3,100 subscribers also someday come, or maybe, or sometimes we get a lot of love that okay, yeah, everyone is live, not just for the sake of watching, but actually, believing in my content, believing in what I speak, like every one of you, and hopefully you guys can help spread that word as well. And यार वैसे ही है, that is the reality of it. We have to spread the word, and that is how people will get to know, right? हो गया मेरा बैटरी, थोड़ा सा पानी। चलो यहाँ पे देख रहा हूँ क्या न्यूज आया। आई एम जस्ट लुकिंग एट इट। ओके, Valencia will complete Nico deal on Thursday. Documents signed with Barcelona and medical scheduled. No agreement for Arthur Melo with Juventus. Deal could collapse. So Arthur Melo is sticking on to Juventus, looks like अभी के लिए. But Nico जो है बार्सिलोना से जा रहे Valencia on loan. Talks on for Brian Gill from Tottenham, but still no green light from Tottenham. Also मुझे पता है Villarreal were trying for Lo Celso. पता नहीं वो हो गया कि नहीं. People correct me if I'm wrong. वो भी I think was going to be happening because हाँ, डिफरेंट प्लेयर्स. डेस्टिनी उडोगी जो आने वाले हैं टॉटनम, ही इज गोइंग बैक ऑन लोन टू उडिनेजी. लेकिन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज मोर ऑफ अ कॉस्टिच एलिमेंट, जहां पर वो खेलते हैं विंग बैक स्लैश विंगर. Chelsea bid Cassidy. Yeah, again, I don't think that's for first team, right, Adwe? I know 12 million looks like for first team, जैसे हुआ था for चुकोमे का, लेकिन मुझे लगता है वो जूनियर टीम के लिए आएंगे. मतलब he'll probably start, in junior team. भाई पानी पी रहा हूँ यार. बिग अप भाई, बिग अप बिग अप बिग अप. या कर चुके हैं, लेकिन और भी कर सकते हैं यार. मेरा आदित्य देखो, फ्रेंकी डियोंग का एक ही है. आई डोंट थिंक चेल्सी विल बज. चेल्सी हैव लर्न देयर लेसन्स, व्हेन इट कम्स टू Rafinha, when it comes to Diong, sorry, क्या नाम है यार, जूल्स कुंडे. फ्रेंकी डियोंग, we won't budge until हमें ग्रीन लाइट मिले फ्रॉम फ्रेंकी एंड बार्सिलोना कि भाई आप ले सकते हो. यू हैव टू जस्ट डू द फॉर्मेलिटीज. ये किसी का सीक्रेट नहीं है दैट चेल्सी आर अग्रीइंग टू पे व्हाट इट मे बी फॉर फ्रेंकी डियोंग. हाँ, कैसे करेंगे भगवान जाने. बट टॉड बर्ली एंड ग्रुप यार, बिग अप उनको. अब देखते हैं हाउ विल ही फिट. In my opinion, we might go 4-3-3. That is the only way to keep him happy. Because Luigi Van Gaal सोच रहे भाई, I need my players to play. Or coming to league, he'll understand, settle maybe, sometimes, or फिर change from a Kovacic at times, change from a Jorginho at times. नहीं तो he might play as a third center back at times during that times. लेकिन हाँ, फ्रेंकी अभी तक I don't think Chelsea will go for it. As per mixed reports यार, वही बोल रहे यार, he might reduce salary. He wants to come to Chelsea. He's not liking Barca. जो fans से against, he's got some, as in there's a retaliation. तो mixed reports है थोड़े आदित्य. तो I won't react right now. Maybe सुबह तक वीडियो आए on Almighty Blues FC. Do check out for that. अगर मेरी तबीयत ठीक है तो we'll try and record that as well for sure tonight. Tuchel misses Petr after seeing Mendy and Kepa. भाई, Mendy is very, very good. I know he's trying to joke. Because Bhaiya, you're a fan of any sitcom. Oh, by sitcoms, yeah, there used to be a time there where I used to watch. जब मैं अकेले रहता था in Canada for a long time, in Pune for a very long time. तो वहाँ पर I used to watch a lot of sitcoms. Again, मैं, to be very honest, I'm not an English watcher. मैं ज़्यादा अपना देसी पसंद करता हूँ. Maybe because I was living abroad or I used to miss desi stuff. So I am a little bit old school in that, and I am a little bit nostalgic as a person. I'm pretty sure the people who watch me live a lot of times, they do realize that by now. मैं nostalgic हूँ. I actually look at very old series वो सब देखता हूँ वापस से. Like for example, ब्योमकेश बख्शी. I think वैसा जो बना था series, wow, as in I would love it. Anytime I can just watch it. But again, online sitcoms I watched lots. लेकिन यार for some reason वो नाम याद रहते नहीं मुझे. मैं देखा हूँ, काफी देखा हूँ मानो. और यार मैं याद करना चाहूँ तो काफी इंटरेस्टिंग वाले भी थे. आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, सिटकॉम तो नहीं बोलूंगा. आई डोंट नो इफ पीपल रिमेंबर्स, 90s किड्स विल probably remember like me. There used to be a crystal maze on Star Plus. मैं यार अलग ही बोल रहा हूँ, अलग ही डायरेक्शन में चल गया. क्रिस्टल मेज करके हुआ करता था. आज के जो आप लोग देखते हो ना, रोडीज हो गया,
ये हो गया, मतलब लॉट ऑफ चीज जो होता है ना, टास्क एंड ऑल दैट। भाई क्रिस्टल मेज वाज वन ऑफ द फर्स्ट दैट केम ऑन इंडियन टेलीविजन। तो पीपल डू वॉच दैट। अगर आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूट्यूब में अभी तक होगा शायद। और एक और मैं कॉमेडी में बोलूँ ना, मेरा एक बेस्ट था सारा भाई वर्सेस सारा भाई। आई डोंट नो इफ पीपल हैव वॉच्ड दैट, वो भी स्टार का ही था। आई नो मैं फ्री में यहाँ पे प्रमोशन कर रहा हूँ उनका, लेकिन आई एम अ ह्यूज फैन, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द सारा भाई फैमिली। तो दोज आर सर्टेन थिंग्स, मतलब आई नो डिफरेंट एलिमेंट्स। आई एम अ ह्यूज सस्पेंस थ्रिलर वॉचर एज वेल, मैं वो भी काफी देखता हूँ। इनफैक्ट मैं तो आई एम एज बोरिंग एज वॉचिंग सीआईडी फॉर आवर्स, आई एम दैट काइंड ऑफ गाई। तो आई एम लाइक, इट डजंट मैटर, मतलब वही आई एम जनरली, आई डोंट नो आप लोगों ने ये भी फिगर आउट किया जस्ट, यस हाफ टाइम में, तो मैं थोड़ा शेयर करूँ अपने बारे में। आई एम ऑलमोस्ट वियर्ड इन अ वे, यस आई एम डीसेलिंग माई सेल्फ यहाँ पर, इन अ वे दैट आई एम नॉट द फॉलो द क्राउड टाइप्स। और यहाँ में मैं भी बहुत बार बोलता हूँ भेड़ चाल, दैट इज वॉट लाइफ इज, रियलिटी इज, लेकिन मैं भेड़ चाल में एकदम ही बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ भाई, वो तो यार आप देखो, आई डोंट नो इफ यू हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड मी इन चैनल्स और encouraging others. I'm rather, again, big up to everyone. Again, don't get me wrong. Lekin I rather feel the people who are not getting support requires me to be there in the chat. Or may I would love and give them support there, because I think that is what I am. I would do that, and I like basically to watch weird stuff. When I say weird, don't get me wrong again, but not very common things that I watch. Yeah, हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा यार, आई थिंक दैट बीट्स एनीथिंग। आई एम लाइक अ ह्यूज, मतलब आज तक भी यार देखो, आज भी यार मानव, टू बी ऑनेस्ट देयर इज नॉट अ सिंगल डे व्हेन आई डोंट वॉच तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं सच में बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बैंगलोर में रहता हूँ यार अभी, लेकिन आई ट्रैवल बिटवीन कनाडा एंड इंडिया। लेकिन हाँ, अभी के लिए फॉर द लास्ट ईयर एंड हाफ आई बीन इन बैंगलोर। एंड ऑफ कोर्स मैं कितना 25 साल से ज्यादा बैंगलोर में रहा हूँ, और थोड़ा पुणे में रहा हूँ, थोड़ा टोरंटो में रहा हूँ, जस्ट सो यू नो। ओके, आदिल तरफ विल सिटी रिप्लेस बर्नार्डो सिल्वा इफ ही लीव्स, इंद्रानी पूछ रहे हैं। नहीं, आई डोंट थिंक दे शुड पैनिक। सिटी हैव लॉट ऑफ क्वालिटी, लाइक समवन इन द चैट ऑलरेडी सेड, बिग अप आपको जो भी चैट किया भाई। They said about Phil Foden. Phil Foden can play in midfield proper. Yes, he can be your next Bernardo Silva. वही था plan, in fact. Uh, Gundogan, he probably starts जो weekend में दिखे थे. तो I think two absolute players है जो are ready to fill that spot. And remember, they can change formation. Calvin Phillips has not got lot of minutes anyway. तो they can change formation, or they have a lot of attackers. Grealish also, सच में बोलूं, he can also play as a left central attacking midfielder. ठीक है, he can be a number 8 as well. Okay. बोयान कर्किच यार, टॉक अबाउट एनिग्मास यार, एल शरावी, बोयान कर्किच, इब्राहिम आफले, और कौन कौन है यार, इतने सारे लोग थे ना जो बारसा एसी मिलान से कनेक्टेड थे, कहाँ गायब हो गए यार ये लोग, समझ में नहीं आ रहा मुझे। इवन चेल्सी हैड सम यार, चेल्सी को बैन मिला था फर्स्ट टाइम, किसी को याद है कौन सा फ्रेंच प्लेयर था वो? एनीवन इन द चैट? लेट्स हैव अ क्विज क्विकली। देयर वाज अ फ्रेंच यंगस्टर who Michael Ballack said once that he's going to become the next big thing in Europe. Unfortunately, did not turn out to be that way. वो खेले ला लीगा में भी। आप बोलिए कौन सा प्लेयर है वो फ्रेंच प्लेयर, बिकॉज विच चेल्सी वर बैंड फर्स्ट टाइम, और अदर फाइंड एज वेल अ लॉट। बाद में अडामा ट्रायोरे के लिए भी हुए थे, बट दैट गाय वाज फर्स्ट। Why is no club targeting Endika? Awar का मुझे पता है, अवार अगेन आई थिंक द फिजिकल एलिमेंट होगा, मानव एज मच एज वो टेनेशियस मिडफील्डर है, आई थिंक फिजिकल एलिमेंट प्रीमियर लीग टीम्स नहीं जा रहे हैं। एंजो फर्नांडिस इज, मार्क माय वर्ड्स मानव, बहुत अच्छा पॉइंट है, एंजो फर्नांडिस विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन यूरोप, ही विल बी द नेक्स्ट बिग साइनिंग। ये आप देखिए, कहाँ में बेनफिका गए ना, कहाँ गए मानव, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक एंजो फर्नांडिस फाइनली वेंट टू बेनफिका, इज इट? लेट मी जस्ट चेक। I think he made a move finally, Argentine footballer. हाँ, बेनफिका। तो आई थिंक ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग वन। और अगेन पोर्चुगीज फुटबॉल से काफी लोग आए। गेम ऑफ थ्रोन्स इज बेस्ट यार, मैंने देखा है गेम ऑफ थ्रोन्स। अगेन यार वही है, टू बी ऑनेस्ट आई प्रेफर ईदर विच आर लाइक इजीली अंडरस्टैंडेबल और थोड़ा लाइट, दैट काइंड ऑफ सिटकॉम्स। लेकिन हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स काफी अच्छा है यार, दे मेड इट रियली वेल। मैंने, लाइक आई सेड, आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ इट यार। मेरा वही ना, आई कैन लिव ऑन स्पोर्ट्स, सच में बोलो तो यार मैं 90% स्पोर्ट्स ही देखता था, देखता हूँ और देखता रहूंगा। मेरा वही है। लेकिन हाँ, 10% में मैं आई एम अ मूवी बफ, एंड यस आई एम अ बॉलीवुड बफ। आई हैव वॉच्ड अ लॉट ऑफ इंग्लिश मूवीज ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स,
लेकिन आई एम रियली अ बॉलीवुड बफ, आई एम प्रॉपर यार. इनफैक्ट देयर यूज्ड टू नॉट बी अ सिंगल वीक जहां पर मैं जाकर थिएटर में देखता नहीं था मूवी. दैट काइंड ऑफ अ बॉलीवुड बफ आई वाज. And real life friends is a fictional, the reality of life is Mirzapur. Oh भाई साहब, guys, oh my god. तो सर हम भी देखते हैं आर्सेनल सो मिडिल क्लास सुपीरियर क्लब इज चेल्सी. ये कहाँ से आ गया? मिडिल क्लास और सुपीरियर वाला आशीष रेफरेंस दे रहे सारा भाई का. ओके, मोमा मोमा यस सैफ यार, बिल्कुल बिल्कुल मोमा. या बिल्कुल बिल्कुल. ओके, फेयर इनफ फेयर इनफ. Oh my God. Thanks, man. I'll take it as a compliment. I think Chelsea have already given green light from. Okay, they've got green light. Chelsea and Barcelona. या आदित्य, ये तो पुराना न्यूज़ है, हमने पहले रिएक्ट कर लिया इसके बारे में. देखिए यार, फाइनल है ना, अभी तक हुआ नहीं है. आफ्टर रफीनिया, आफ्टर मिस्टर जूल्स कुंडे, मैं काफी काफी वेट करूंगा. आई डोंट वांट टू रिएक्ट, लेकिन यार मैंने ऑलरेडी रिएक्ट कर लिया है एक स्ट्रीम में जहां पर मैंने बोला हाउ विल फ्रेंकी बी यूज्ड, क्यों जा रहे हैं टुकल फ्रेंकी के लिए टैक्टिकली. वी हैव डन अ प्रॉपर स्ट्रीम वहां पर. तो दैट माइट बी द आंसर, लेकिन टाइम विल टेल. अब देखते हैं, कल विल ट्राई एंड डू अ स्ट्रीम और अ वीडियो. हाँ, बाय द वे कल फेस्टिवल है यार, तो आई माइट नॉट बी लाइव मच, लेकिन आई विल ट्राई एंड डू वीडियोस एंड रिलीज इट एज आई ऑलवेज डू. James McAtee is a next monster. Okay. Hmm. Bellingham below. Oh, wow. Okay, not in terms of quality, but style. Okay. No, let's see. I have not watched much of him. Yes, I was waiting for this answer. Thank you, Ajinkya. Thank you for sharing that. Gail Kakuta was the guy. यार मैंने ना मतलब I was such a mad Chelsea fan. I always am still. Again यहाँ पर इंडिया में not many things are accessible. इसलिए मैं देख नहीं पाता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता खैर अभी तो. लेकिन व्हेन आई वाज अब्रॉड ना, आई यूज्ड टू वॉच एवरी एंड बिलीव इट और नॉट, every Chelsea academy match every minute. You won't believe it, but it's the reality. मैं वो करता था, and be it in office, be it anywhere मैं करता था यार, मैं वैसा फैन था. But anyway, people will not realize what I'm talking. You not just believe because the things are accessible वहाँ पर. Zuma is goat who. Oh my God, Kakuta, yeah, बिल्कुल. Kukuta, Kakuta, yes, बिल्कुल बिल्कुल. एल शरावी प्लेस फॉर रोमा, यस, बट हाँ एक समय में एल शरावी वाज वाओ, एक सीजन था. अलेक्जेंडर पाटो यार, टॉक अबाउट हिम, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट. या ही इज बीन साइंड बाय बेनफिका. लेकिन वही है, बेनफिका में एक साल भी रहे तो ही मूव्स ऑन. आई वोंट बी सरप्राइज मानो, ही माइट जस्ट मूव. अच्छा चलो, फ्रैंकफर्ट सब्स आर वार्मिंग अप. क्रिकेट और फुटबॉल अंकित भाई यार, प्लेइंग में क्रिकेट, वॉचिंग और फॉलोइंग में फुटबॉल. एज मच एज मैं बोलना चाहूंगा क्रिकेट, क्रिकेट में फर्स्ट लव एनी डे. मतलब 92 वर्ल्ड कप, मैन आई स्टिल रिमेंबर, आई दैट वाज माय फर्स्ट क्रिकेट मैच टू वॉच. लेकिन हाँ, द फैक्ट दैट मैं मतलब देयर देयर यूज्ड टू बी लाइक, अगेन आई एम श्योर प्रीटी मच बहुत लोग चैट में भी सेम रिलेट कर पाते होंगे. लेकिन लाइक इन समर हॉलीडेज देयर यूज्ड टू बी लाइक 10 आवर्स नॉन स्टॉप मैं बाहर खेलता था यार, नॉन स्टॉप, मतलब नॉन स्टॉप, आई मीन इट. That is what cricket I used to play. Football भी काफी खेला हूँ मैं. Football I started late though. I started like for cricket I started right from my what, as in literally a बच्चा, you know. But football I started. In fact मैं hockey खेलता था. Just to share with you, I don't know if I've shared ever with you all. I used to play hockey. Yes, I played hockey from my house team, from my school. Then we also played hockey when I was in engineering. तब भी हम सुबह सुबह जाते थे, hockey खेलते थे. Cricket or hockey I used to play more. Football I started during my engineering days. In fact, yeah, actually just before that. Sorry, I started maybe between my 12th and engineering days. तब मैंने शुरू किया था, वो जो break हुआ था ना. Again, I started watching football much around my 10th. You can calculate my age with that. लेकिन हाँ, so that was where 9th 10th में I started catching up to football, and then after 10th board, जो break आया, I started playing a little bit of football. लेकिन 12th के बाद proper I started where I used to play weekends and all that. चलो, यार बता दिया यार मैंने ऑलरेडी, इन शॉर्ट बता ही दिया. एवरी डिसम्बर चेल्सी प्लेज बैड, रिमेंबर अंकित, विंटर इज कमिंग एंड नाउ. ओके, नहीं यार. गेम ऑफ थ्रोन से टुकल यार, there's always a first, there's always a change of wind. Wind changes its direction, remember. I don't believe in always, लेकिन कभी कभी होता है. Desai or Dennis Wise more underrated player? Oh, Dennis Wise. Okay, you know what, split opinion मैं बोलूंगा. Dennis Wise splits opinion. Opposition fans hate him, and I mean hate.
because he was a very dirty player for them at times. Lekin if you are a Chelsea fan, if you are basically anyone that Dennis Wise played for from that club, you love him, you adore him. Captain of the highest order. Desai was more out of respect and the fact that he's so calm, he had a vision. In terms of footballer, probably Desai is a better player. Underrated to nahi the. Yes, maybe in England the, but overall, I don't think he was as underrated. There's Dennis Wise, probably I'll go with him because I don't think people talk him about it enough because us samay English midfield was crazy and Dennis Wise did not get that kind of recognition generally in England, right? Uh, okay. अरे बिल्कुल यार अरिजीत अच्छा चल रहा है यार थैंक्स अगेन फॉर कमिंग एज ऑलवेज एंड बिग अप यार आपको भी और सेकंड हाफ शुरू हो गया यार आई डोंट गो वॉच क्रिकेट लास्ट टाइम आई वेंट साउथ अफ्रीका हिट 450 रन अगेंस्ट इंडिया एंड डिसाइडेड ओडीआई एट वानखेड़े ओह माय गॉड मैं देखने भी जाता था यार काफी खेलने तो जाता ही था यस आई हैड आई वाज लकी इनफ टू बी प्लेइंग एट चेपॉक यार दैट इज वन ऑफ द माय मोमेंट्स एज अ क्रिकेटर या नॉट अ वेरी हाई लेवल क्रिकेटर बट एटलीस्ट आई प्लेड एट द चेपॉक मैं इतना बोल सकता हूँ मतलब चिन्नस्वामी बी स्टेडियम में भी खेला हूँ काफी लेकिन नॉट द मेन स्टेडियम But yeah, do you think people just underrate Chelsea last UCL win and just think of it as luck as chance? यार आदित्य देखिए यार टू बी ऑनेस्ट चेल्सी को मिला भी था लेकिन sometimes you don't realize what you've done until a few years. तो यार wait for a few years. I think probably people will recognize कि क्या किया था चेल्सी ने दोनों बार 2012 अरे व्हाट अ डिफेंसिव एरा यार भाई फ्रैंकफर्ट बट बैड पास विनिशियस का अरे दे शुड हैव कैपिटलाइज्ड तो यस आई थिंक यार पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग अगेन आई डोंट थिंक द फेयर न्यूट्रल्स बोलते हैं भाई तो टोटल लक यार हमने पहला यूसीएल फिर भी लक में जीता था काफी आप बोल सकते हो सेकंड यूसीएल आई थिंक really did well group stages में Lampard's team dominated and in the knockout stages भाई Atletico Madrid also when we did a terrific performance and then obviously Real Madrid सबको याद है भाई मतलब that was a lesson of course they beat us in the following year I have to give them that's why they're playing Super Cup भी लेकिन हमने एक लेसन दिया था रियल मैड्रिड को मतलब that's a fact in 2021 right तो मैं नहीं बोलूंगा it was luck if people are saying यार so be it यार मैन सिटी के साथ I don't think there was a moment in the game where you thought Man City are going to win. You thought they will equalize at best. ऐसे नहीं लग रहा था अगेन सिटी फैंस आर देन आप बोलिए आपको लग रहा था इन द गेम चेल्सी लेट एक स्लिप गेम स्लिप बाय टू से दैट मैन सिटी वुड विन द गेम आई थिंक इक्वलाइजर लग रहा था एंड वी डिफेंडेड वेल एंड दैट्स पार्ट ऑफ फुटबॉल यार डिफेंडिंग व्हाट ब्रिलियंट टैकल्स मुझे याद है बाय रीस जेम्स बाय रूडिगर बाय एस्पिलिक्वेटा व्हाट ब्रिलियंट टैकल्स क्रिश्चियनसन रिप्लेसिंग थियागो सिल्वा ओह माय गॉड एक गोल कर दो सेकंड हाफ में आप चलो यार होपफुली अरे यार मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ जब मैं फीफा खेलता था ना एक ऐसी टूर्नामेंट बनाता था उस टूर्नामेंट में आई टू हैव अबाउट क्लोज टू 20 टीम्स पार्टिसिपेट तो मैं वो बोलता हूँ 20 आर लाइक रियली फेमस क्लब्स 20 तो है यार मतलब करीबन 15-20 तो है डेफिनेटली ऑनरी बेस्ट प्लेयर टू ग्रेस प्रीमियरशिप यार कोई बोल रहा था डेनिस बर्गकैम्प ओके एक सेकंड उसमें आता है अद्वै यहाँ पर रियल मैड्रिड कीपिंग सब पोजीशन मीनवाइल फॉर अ चेंज सेकंड हाफ अच्छा शुरुआत किया रियल मैड्रिड ने आई हैव टू से डेनिस बर्गकैम्प हाँ बिल्कुल देखा यार बिल्कुल देखा हूँ बोथ एज अ डच फैन एज वेल एज अ प्रीमियरशिप फैन आई हैव वॉच्ड हिम लाइक आई सेड माय फर्स्ट गेम फॉर चेल्सी वाज 1999 लेकिन वीक इन वीक आउट आई स्टार्टेड वाचिंग इन 2002 लेकिन हाँ डेनिस बर्गकैम्प दोनों ही में थे और आई वॉच्ड लॉट ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल बिटवीन 1998 एंड 2000 एज वेल तो वो भी था मेरा काफी डेनिस बर्गकैम्प का देखा है मैंने यहाँ पर मैं बोलता हूँ डेनिस बर्गकैम्प स्किलफुली वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव सीन वाचिंग लेकिन इन माय ओपिनियन एज एन ओवरऑल प्रोडक्ट ये है ये है मेरा ऑनरी और हाँ मैंने गोट लेवल में ऑनरी को नहीं डाला था काफी लोग सरप्राइज थे क्योंकि आई ऑलवेज रेट ऑनरी एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स दैट्स ग्रेस द प्रीमियरशिप प्रॉब्लम इज मैं उसका ऑपोजिशन से देखा हमेशा तो देयर हैज टू बी लाइक एन एंटी ऑनरी एलिमेंट एज वेल लेकिन अप्रिसिएशन दैट्स व्हाट फुटबॉल इज ऑल अबाउट जिस समय जो टॉक्सिक फैंस है नॉट ऑल बट सम आर देयर समझ जाए ना ये चीज मतलब ऑनरी यूज्ड टू बी वन ऑफ माय मोस्ट फियर्ड स्ट्राइकर्स एट द सेम टाइम आई शुड हेट सीइंग ऑनरी नॉट हेट द प्लेयर hate seeing Henry in an opposition against Chelsea but I appreciate him the most as well that is the whole point
The fact that Chelsea don't get the credit they deserve, both the UCL title victories came from teams who were weak on paper with no stars of playing football. Beautiful football. But yeah, bilkul, yeah, thanks. Again, Mana, big respect to you as well, yeah. Well, the fact is, people forget that, counter attack, defense, those are all part of football. Those are all tactics, those are all part of football. I don't know, ye kahan ka rule hai, you should play only tiki taka. I don't know why. Well, as much as that is also superb, it's very tough to play, probably tougher. Lekin I don't think so that requires bias. इजी ऑन द आई यार, अगर जीतते ना गोल्स गेम्स तो भाई क्यों क्यों तो हम खेलते हैं फुटबॉल, क्यों ही तो हम देखते हैं ना. मैन सिटी हैव कंप्लीटेड साइनिंग ऑफ एंडरलेक्ट लेफ्ट बैक सर्जियो रोमेस फॉर हो गया क्या? ओके, ये आज सुबह हुआ था ना कि अभी कंफर्म किया है, देख रहा हूँ मैं. अरे हो गया यार, कंग्रेचुलेशन यार सिटी फैंस. आई बिलीव इज अ फैंटास्टिक टैलेंट. हाँ, ये भी मैं बोलना चाहूंगा, सेम चीज अगर चेल्सी करती ना, चेल्सी फैन बेस एज मच एज मैं खुद बहुत लोगों को प्यार करता हूँ, बहुत टॉक्सिक भी है, वो लोग बोलते भी आर पैनिकिंग. पीपल, इट्स डन. मैन सिटी फैंस, कंग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट अ लेफ्ट बैक हु कैन प्ले मल्टीपल पोजीशंस आई हियर. आप बोलिए, वेयर वुड यू सी? Okay, you will be loaned out to La Liga side Girona. Sergio has good chance to play, chance to be part of City. Otherwise, he'll be loaned out. Okay, so okay, so basically, he can be loaned out immediately as well. Frankfurt with a chance here. Oh, what a tackle, man! Was it Casemiro? मैं चश्मा नहीं पहना, वही मैं सोच रहा था क्यों मैं मिस कर रहा हूँ. Casemiro with a double save यार, first tackle and then interception. So Sergio has good chances to be part of City team. Otherwise, he will be okay. So 5 महीने I think देंगे उनको. नहीं तो he'll probably be moved on in January, at least for loan. Okay, why we not? पता नहीं यार भाई. मैं क्या बोलूं, मतलब मे बी फफाना बैक फोर में भी खेल सकते हैं. दैट्स माय ओनली आर्ग्यूमेंट. स्क्रीनियर भी खेल सकते हैं. उनके आई थिंक स्लोवाकिया के लिए खेलते हैं. आई थिंक ही डज वेल. अगेन सॉरी यार, मैं स्लोवेनिया और स्लोवाकिया में कंफ्यूज हो जाता हूँ काफी. आई नो इट्स माय बैड, बट basically speaking, I know it's really bad of me, but I'm just saying it as it is. यार, I don't want to cover it up for the sake of it. लेकिन anyway, देखिए यार, स्क्रीनियर आज के दिन में मच बेटर प्रोडक्ट है इन बैक थ्री, व्हाट आई हैव सीन इन इंटर मिलान. 65 मिलियन में भी आएंगे एज अपोज टू 85 मिलियन ऑफ फोफाना. अब देखते हैं, टाइम विल टेल. एंड यस, बाय द वे, ये है कि यार फोफाना हम ट्राई करें 80 मिलियन प्लस एड ऑन, सो दैट रिकॉर्ड नहीं ब्रेक होए. बट इवेंचुअली हो जाएगा मेरे ख्याल से रिकॉर्ड ब्रेक. लाइव इन द स्टेडियम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखा हो यार. मैं आई हैव वॉच्ड MLS. इनफैक्ट आई हैव वॉच्ड नॉट ISL, but I have watched certain games as well in the Bangalore का stadium में. But I have certainly watched MLS. Toronto FC को देखा है मैंने यार. In fact, not only MLS, I watched the cup competition as well. Why not like IPL different time? यार ये होता था in lockdown time, लेकिन the thing is, in the UK, I think it's down to weather as well, if I'm not wrong. तो they don't want to stretch it too much, because it's extremes ना, especially during winter. तो हम पूरा कॉन्स्टेंट रखते हैं, और ये टीवी राइट्स होते हैं. तो नॉट एवरी क्लब गेट्स अ टीवी राइट्स फॉर अ प्राइम टाइम सैटरडे फॉर एग्जांपल, राइट, इन इंग्लैंड. तो दे काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट इट वीकली बेसिस पर. तो certain teams get featured on TV, certain don't. Live TV on in UK, that is. लेकिन नहीं में सिटी हैड जस्ट 3 चांसेस टू इक्वल. बहुत पैसे यार उसमें. तो अगेन, अगर सब चाहते हो आप टीवी पाए यार, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी, which कोविड के समय हुआ था. दैट इज गुड टू सी. दे kept people occupied, or they stayed in their homes. City had just 3 chances to equalize. I think this speaks volumes of Chelsea's defense that day. We should have played a DM. Yeah, बिल्कुल. That's well documented यार, मानव DM का. तो 10 games to play every weekend, you have to overlap. या बिल्कुल. स्कोर क्या चल रहा है भाई? अभी 1-0 ही है, इसलिए मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया है. Real Madrid keeping possession. Real Madrid feeling that possession game will get that second goal, or they will not concede. Not a bad Slovenia के लिए. चलो, thanks. Company ने recommended him since he was the manager of Anderlecht last season. Okay, nice. Again, Company, yeah, one of the City legends. Pretty sure wo, down the years he'll help City a lot in that sense. Wow. Oh, I take Inter Milan on FM22. Sorry, Ankit. No, sorry, क्या यार, chill है. With the signing of Sergio Gomez, City are in market for another left back as per rumors. Rafael Guerrero. Oh, the Dortmund left back. Okay. Alex Grimaldo तो थे ही काफी दिनों से. Yeah, Eth Nouri might be one of them.
ओके एंड सोजा, लेट्स सी क्या होता है. सम ऑफ द इंग्लिश जर्नलिस्ट एंड मैट लॉन बेन जेकब शुड बी टर्म्ड एज फ्रॉड्स. पता नहीं यार, ये मतलब टू बी ऑनेस्ट ना, क्या चल रहा है वॉर. ये पहली दफा हो यार. मैं हर बार मैट लॉ को फॉलो करता हूँ एज मच एज ही इज बायस्ड, वो मैं अग्री करता हूँ. गोल हो गया यार, बचा लिया यार केविन ट्रैप ने. ओ माय गॉड, लेफ्ट विंग में ओपन अप किया था फ्रैंकफर्ट को, लेकिन यार आई डोंट थिंक विनिशियस कुड फिनिश इट डायरेक्टली टू केविन ट्रैप, लेकिन केविन ट्रैप डूइंग अ डेविड डिया क्लियरिंग ऑफ हिज लेग्स. लेकिन हाँ दिव्यांशु, मैं अग्री करता हूँ, मैटलॉ हैज एक थोड़ा पर्सनल एलिमेंट ला देते हैं वो लोग, प्रॉब्लम ये है, दे गेट वेरी पर्सनल फॉर वट एवर रीजन. आई थिंक थोड़ा सा इट्स अबाउट ईगो देयर, विच इज रॉन्ग इन मैटलॉ. आई अग्री देयर, बट यहाँ पर कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है भाई, लेट्स सी. आई वोंट गो विद वन और टू काइंड ऑफ इंस्टेंसेस दिस समर, बट हाँ अगर ज्यादा इंस्टेंसेस होंगे तो देखते हैं भाई. अगर आई अग्री विद यू मोर देन डिसअग्री इन दिस केस. यूके में कितने क्लब्स हैं? मोर देन 557 रजिस्टर्ड क्लब्स. ओ वाओ, थैंक्स आशीष शेयर करने के लिए. आईपीएल की तरह हर साल ऑक्शन होता है क्या? नहीं यार, ये फ्रेंचाइज सिस्टम नहीं है, वो होता है अपने अमेरिका में होता है, यूएस में होता है. इन ऑल द अदर स्पोर्ट्स इट हैपेंस. दे हैव अ फ्रेंचाइज सिस्टम, दे हैव अ पूल ऑफ प्लेयर जहाँ पे बिडिंग होती है, जहाँ पर आईपीएल वही करता है ना, तो यहाँ पर वो नहीं होता, यहाँ पे ट्रांसफर्स होते हैं. तो economic subscribed. Oh, okay, nice, nice. Mikhail, I think it's you, bro. Who's it? I think it's Mikhail itself. Correct me if I'm wrong. Big up, big up. Do you think Burnley manager needs some of my company? सबसे ज्यादा पैसे किस प्लेयर को मिलते हैं ईपीएल लालिगा में? यार ईपीएल में तो सबसे ज्यादा पैसे, सैलरी, गुड क्वेश्चन यार. आई थिंक हालैंड का हो गया क्या सबसे ज्यादा? यार किसी को मालूम है तो बता दीजिए. आई डोंट नो द स्टैट्स. अगेन आई माइट चेक इट अप, लेकिन मुझे लगता है प्रोबेबली हालैंड का ही होना चाहिए सबसे ज़्यादा सैलरी, फ्रॉम व्हाट आई नो. हाँ, ही केम ऑन अ चीप इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर फी, लेकिन उनका सैलरी शायद ज़्यादा, वेजेस बहुत ज़्यादा था, जहाँ जब तक हम जा रहे थे एटलीस्ट. और डू यू थिंक इट्स रोनाल्डो? लेट्स सी, आई डोंट नो मैन. ईपीएल में किसका होगा सबसे ज़्यादा सैलरी? आई एम गेसिंग हालैंड का ही होना चाहिए. और नहीं, साला यार, साला ने ब्रेक कर लिया ना अभी, लिवरपूल का तो डेफिनेटली ब्रेक किया है. आई डोंट नो इफ ही इज अप हालैंड एज वेल. लालिगा में सबसे ज़्यादा, फ्रॉम व्हाट आई नो, I think it's got to be Griezmann. Correct me if I'm wrong, people. Griezmann का सबसे ज्यादा था. उससे सैलरी उनसे ज्यादा कोई लेता है क्या? ओके, De Bruyne स्टिल टॉप. ओके, इंटरेस्टिंग. साला, आई थॉट यार साला ने ब्रेक कर लिया था ना, साला का जो हुआ था. आई माइट बी रॉन्ग, क्लोज टू 400. नहीं, मैं 400 के पर वीक है बाय द वे, पाउंड्स में. For new watchers, my first moments of football was Drogba moment when I started watching. Diego Costa was the guy I used to hate, but Chelsea have good and bad memory. Oh, nice, nice यार. Sebastian Rode यार, बहुत ही experienced player going off for Frankfurt. और यहाँ पे कौन गोड से आने वाले हैं क्या? They need a goal. तो let's see who's coming on for Frankfurt. फ्रेंकी डी यंग हो जाएगा सबसे ज्यादा. हाँ यार, गोडसे इज कमिंग बैक भाई. गोडसे इज कमिंग. साला का होगा. इवन आई एम ओके. रोनाल्डो इज हाईएस्ट पेड प्लेयर फॉलोड बाय केडीबी, साला. वही है मतलब, रोनाल्डो दैट पूल ऑफ प्लेयर्स, रोनाल्डो, केडीबी, साला, हालैंड, डेविड डिया. ओके, नाइस. ये मुझे पता नहीं था. थैंक्स मानव टू शेयर एज ऑलवेज. बट यस, अगेन पीपल जो भी ज्वाइन कर रहा है भाई, भूलिएगा मत, देयर इज अ लाइक बटन, देयर इज अ सब्सक्राइब बटन. अगर आपने नहीं किया, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब. कैसे 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 नाम होते हैं, हालैंड. इट्स इट्स एक्चुअली हॉलैंड, राइट? इज इट? आई थॉट इट्स अर्लिंग हॉलैंड एक्चुअली. नहीं, नन ऑफ चेल्सी टॉप स्ट्राइकर्स इन पास्ट 10 years, वो नंबर 9. Tammy Abraham was the top striker for a season and a half. Won't you agree, Adway? Come on. At least season and a half के लिए he was a top striker यार. या बिल्कुल बिल्कुल भाई. कम ऑन, आई नीड वन मोर गोल इन द मैच यार. काफी पोजीशन बेस्ड फुटबॉल हो रहा है, नॉट रियल मैड्रिड स्टाइल. कम ऑन. ये क्या मेसी क्राइड एट सब्स्टिट्यूशन? कौन सा भाई? गोट से कमिंग ऑन. गोट कुछ तो अदरवाइज ट्राइंग देयर वर्ड प्ले. आई नो दैट. वहां पे कुछ तो ट्राई कर रहे. मेसी, वेट, हु वेंट एंड हु केम? सेबास्टियन रोड एंड मारियो गोटसे. मेसी. पता नहीं यार, गोटसे. ओह माय गॉड. ओह,
Sterling is 8th highest now and Koulibaly 10th highest in Premier League for salary. Wow. चेल्सी के स्टैंडर्ड्स बढ़ गए यार थोड़ा क्या और क्या बोलोगे. टीमो वर्नर वाज राइट अप देयर बाय द वे. टीमो वर्नर चले गए ऑब्वियसली. So you think Chelsea clubs should focus more on developing the academy players so that if they are not getting any player from the market, they can go for their academy. The United situation, to be precise. Well, it always helps, right? आप देखो Chelsea has invested billions. Oh, nice try यार रियल मैड्रिड का. लेकिन आई थिंक डिफेंड किया अच्छा. अच्छा काउंटर था भाई, लेकिन डजंट वर्क. केविन ट्रैप वाज देयर. तो देखिए दिव्यांशु, यू हैव अ पॉइंट सर्टेनली, बिकॉज यार आप देखो ना, सिंपल एज अस, हम भी 1-2 खेला मॉडरिच एंड विनीशियस ने, लेकिन वेल ब्लॉक्ड अगेन. देखिए चेल्सी ने बिलियंस डाले, क्यों डाले? एट सम पॉइंट यू नो दैट यू कैन नॉट डिपेंड ऑन द मार्केट एज मच. मार्केट इन्फ्लेटेड है. You need your youngsters, or you need to set up a system to develop that development. Are they capable to develop so much? Or over the years, it takes a lot of time and effort. It takes basically a decade. Bhai, ho gaya goal lagta hai. Whoa, what a strike! It hit the bar. What a brilliant shot that was by Casemiro, yaar. Casemiro back to his best or what? What a game he's having. Wow. Bhai, Casemiro, what a superb game he's having, I must say, yaar. Superb game. I must say, superb strike, yaar. Matlab, he got space. Bad of Frankfurt. By Kevin Trapp was beaten there. So yes, Divyanshu, I would say it's a great way. Lekin I don't think आप immediate returns expect कर सकते हो. It is basically, it takes close to a decade to build that, year in year out. Thoughts on Anelka's career? Oh my God! You know what? He could have been one of the most celebrated strikers of all time, yaar, if he wanted to be. Problem is that उनका मन ना स्थिर नहीं था. First of all, he moved so much. Secondly, he's had problems off the pitch, be it in national team, be it in clubs. Or I think ego let him down. He was a brilliant footballer, brilliant. Don't get me wrong. Like for me, जब बर्बटाव और हम लिंक हुए थे बर्बटाव और अनिल्का के साथ में, I was like Berbatov is a no-brainer. But जब Nicholas Anelka आए, I'm like, oh my God, even now he's playing that way. He used to always play that well. But I thought that maybe unka best is past him. Wow. But having said that, the guy is played literally everywhere in the world here. You have to basically, ek rehta hai na, he had to make a mark somewhere. He's never made that. He, for some reason, did not get that, what he deserved on the pitch. But problem is also because of off pitch, his celebrations at times were overboard. तो उन्होंने खुद को ही ब्लेम करना यार. आई डोंट थिंक ही कैन ब्लेम एनीवन एल्स. आपको देखते देखते मैं भी चेल्सी फैन बन रहा हूँ जस्ट फॉर प्रीमियर लीग. अरे आशीष यार, बिल्कुल यार, मतलब मैं तो बोलता हूँ, मतलब ऑलवेज गो फॉर द अंडरडॉग्स. चेल्सी आर वन ऑफ द मोस्ट हेटेड क्लब्स एंड अंडरडॉग्स. मैं तो जाता हूँ उनको. मैं जैसे बोला ना, मैं भेड़चाल में बिलीव करता ही नहीं यार. मतलब दैट्स व्हाट मी एज अ पर्सन इज ऑलवेज बिन. फुटबॉल इज टू हेट व्हेन यू नहीं हेट किसी को नहीं करता था यार. हेट किसी को करूं यार? मतलब हेट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड. फुटबॉलर हैज टू हेट, नो. मतलब आई यूज्ड टू, मैं किसी का बुरा चाहता नहीं था बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू वॉच. आई वाज आल्सो स्पेक्टेटर ना, टू प्ले फुटबॉल. आई वाज आल्सो स्पेक्टेटर. मुझे अच्छा लगता था यार फुटबॉल, अच्छा टॉप फुटबॉल देखना. और अगर हम जीतते हैं अगेंस्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स, आई लाइक आई सेड, अंडरडॉग स्टोरी मुझे अच्छा लगता है हमेशा. तो हेट नहीं बोलूंगा, लेकिन लाइक आई सेड, I did not pick, for example, other day Henry in my all-time 11. ठीक है, non Chelsea का. You can almost say that okay fine, Ankit did not want him because एक खुन्नस निकाल रहे थे इतने सालों का. लेकिन यार हमने भी दिया यार. ड्रॉग्बा did better than Henry in cup finals and all that. तो ऐसा नहीं है, तो किसी को हेट नहीं बोलूंगा. लेकिन हाँ, there were a lot of feared players. अरे अच्छा मूवमेंट, फ्रैंकफर्ट का गोल होने वाला नहीं हुआ यार. ओ ओपन अप हो गया रियल मैड्रिड का डिफेंस. लेफ्ट साइड रियल मैड्रिड का भाई, मेंडी इज नॉट हैविंग अ गुड गेम, आई मस्ट से. जिम भाई, मैं अगेन रेगुलर नहीं हूं, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट. स्कोर इट्स 1-0 अगेन. ओके कैसेमिरो. ओ माय गॉड. ना, ही इज फर्स्ट मुंबई सिटी कैप्टन. या बिल्कुल यार, ही इज. लेकिन मैं वही बोलता हूं, ही इज लिटरली बीन एवरीवेयर. But yeah, would you celebrate him as a legend of the sport? Not really. Not really. He probably should have been. Which team has been more dominant? Sir Alex United, Pep की Man City. आपने दोनों एरा को देखा है यार. डोमिनेंट तो मैं बोलूंगा यार, पेप की सिटी इज गेटिंग देयर. बट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ यार, सी यूनाइटेड एज मच एज वो बहुत बार जीते हैं,
In games, they were not as dominant. So if you're talking about the gameplay, it was any day Pep की city, any day. लेकिन इन टर्म्स ऑफ बेसिकली एक रूथलेसनेस इन टर्म्स ऑफ ऑल कॉम्पिटिशन जो होता है ना, वहां पर मैं दूंगा सर एलेक्स की टीम्स डेफिनेटली। और मैं बोलूंगा भाई जोसे मोरिन्यो के चेल्सी भी यार, इट वाज फैंटास्टिक मैन। जोसे मोरिन्यो चेल्सी आई थिंक दोनों ही एराज में, दोनों दूसरे एरा में जस्ट फॉर वन सीजन, बट व्हाटएवर, 1.5 सीजन। गोल हो गया यार, कम ऑन, चलो यार सेकंड गोल हो गया बेंजेमा। केविन ट्रैप मिस्ड अ चांस भाई, केविन ट्रैप आयरॉनिकली हैज मेड 2 एरर्स। व्हाट अ ब्रिलियंट गेम प्ले, ओपन अप कर दिया भाई लेफ्ट विंग और अदर राइट विंग, फ्रैंकफर्ट का लेफ्ट विंग विद विनिशियस ऑन ऑन द बॉल, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग विनिशियस ने क्रॉस किया बढ़िया। बेंजेमा विद अ फर्स्ट टाइम स्ट्राइक, जो हमें पता है वो करते हैं भाई। मेंडी की तुलना मैंने की, निंदा मैंने की थी, और अभी यार मेंडी ने बॉल किया। वाज इट ऑफसाइड दो? विनिशियस लुक्ड अ लिटिल बिट ऑफसाइड टू मी, देखते हैं वीआर आएगा कि नहीं। लेकिन भाई केविन ट्रैप शुड हैव डन अ लिटिल बिट बेटर। लेकिन बेंजेमा यार, बेंजेमा पीपल, 2 मोमेंट्स, और वही है मोमेंट्स भाई। ही इज अ बैलन डोर विनर, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। केविन ट्रैप शुड हैव डन बेटर, कम ऑन। अगेन ही मिस्ड टू ट्रैप द बॉल, लेकिन सर्टेनली भाई केविन ट्रैप शुड हैव डन बेटर, नो टू वेज अबाउट इट। बहुत ही गंदा। ओ रॉबर्टो कार्लोस मैन, वाओ। अलग ही लेवल यार, बिल्कुल। मतलब अगेन एकदम लाइव तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन आई वाज वाचिंग लाइव फुटबॉल ड्यूरिंग द टाइम्स, यस। लेकिन यार सर्टेनली यू नो ही वाज लाइक सुपर्ब। एकदम पीक कार्लोस नहीं देखा होगा मैंने, वीक इन वीक आउट मैंने देखा था टुवर्ड्स द लैटर पार्ट ऑफ हिज रियल करियर। लेकिन हाँ सर्टेनली आई थिंक ही इज वन टू यू नो सेलिब्रेट इन टर्म्स ऑफ गोट्स। ओके, द ओपिनियन पेप्स बार्सिलोना वर्सेस पेप सिटी। वाओ, आई डोंट थिंक मतलब एज मच एज पेप सिटी कर रही है भाई, आई डोंट थिंक बारसा का आप कंपेयर कर सकते हो यार। इट हैज टू बी बारसा यार, कम ऑन। बोला वो पेप की बात जो बारसा थी ना, आई नो he has been more in city, by the way. Modric is off and Rodrigo is on, people, but Rodrigo deserves a lot of minutes this season, I must say. तो देखिए, जो बार्सिलोना की टीम थी, एज मच एज दे एलिमिनेटेड चेल्सी नॉट फेयर एंड स्क्वायर इन वन ऑफ द टूर्नामेंट्स, लेकिन मेजॉरिटी में जब भी उन्होंने चेल्सी के साथ खेला या मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ खेला, and we were very strong at the time. Let me tell you, we were really strong, huh? Really strong. Manchester and Chelsea squads were. और उन्होंने जो क्लास सिखाया ना, प्रॉपर क्लास सिखाया। आई थिंक जो चीज यूरोपियन फुटबॉल में भी किया है उन्होंने, और सेम चीज लालिगा में भी किया है। आई थिंक यू हैव टू कमेंड देम अ लिटिल बिट मोर। यस, मैन सिटी विल गेट देयर, डोंट गेट मी रॉन्ग, लेकिन आई थिंक अभी तक जितना है ना, आई वुड स्टिल गिव पेप्स यू नो बार्सिलोना अ लिटिल बिट मोर बिकॉज ऑफ दोज ऑल टाइम गोट्स यार। बाय द वे, आई कंसिडर KDB is one of my regrets as a Chelsea fan, but hopefully, you know, for City fans, he's counted in that regard someday. I despise Rudiger sometimes because he's injured. Oh, I know. Chalo, chalo, I understand, bilkul. Yeah, just like I think Sayed and few Liverpool fans. Arey, nice cross, yaar. Frankfurt upping a gear. लेकिन अगेन बढ़िया डिफेंसिव हेडर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अलाबा और मिलिटाओ का मिक्सचर, और कोटवा प्रेजेंस यार, यू हैव टू गिव हिम। देखिए यार मानव, आई नो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सम लिवरपूल फैंस डिस्पाइस रामोस, आई नो दैट, वो होता है। मतलब इवन एज चेल्सी फैंस देयर आर सर्टेन प्लेयर्स दैट डिस्पाइस्ड, लेकिन हाँ आप हेट, आई थिंक दैट्स अ लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर वर्ड इन माय ओपिनियन। Yeah, Real taking the half chances with Frankfurt remains wasteful of theirs. Familiar tale for us CFC follows, बिल्कुल यार। मतलब that is something that I would relate to it एकदम 100%। चलो यहाँ पर केविन ट्रैप trying to give an assist directly, लेकिन it's too far obviously, man. It's all about Real just keeping shape and keeping, you know, the ball, or keeping just calmness. तो it's all Real's game. Do you see a comeback coming? What do you think, people? बोलिए आप लोग, और वैसे लाइक्स भी कर दीजिए, डेफिनेटली हेल्प्स। और यहाँ पर और थोड़ा पानी। Lukaku is only one, I guess, who could be near to hate. Yeah, I hear you, Aditya, definitely. But हाँ, वो ये ना, हेट का जगह आई वुड से दैट यार बदला निकालो और हेट भी चल जाएगा। आई वुड से दैट, मैं तो बोलता हूँ वी हैव टू मीट इंटर मिलान और वी हैव टू एलिमिनेट देम यार। मैं तो डायरेक्टली बोल रहा हूँ। या बिल्कुल। I disagree. I hear about KDB Salah a lot. They were not very good, but they improve if Werner joins
City tomorrow and score 30 goals. Will we say Chelsea made a mistake? We had Oscar when we left the नहीं है, लेकिन इवन एट दैट टाइम यार, अदवे यार, अब एक दूसरे को तो हम इतना बार जानते नहीं थे उस समय, लेकिन उस समय भी मुझे लगा था दैट केडीबी कैन बी दैट मैन, क्योंकि केडीबी वाज मेंट टू टेक दैट लॉन्ग शॉट्स, ही वाज मेंट टू मेक दैट लॉन्ग पास, दैट वाज ऑलरेडी मिसिंग. यस, नॉट दैट लेवल, लेकिन भाई उसने दिखाया था वुल्सबर्ग में भी बाद में, राइट? तो द गाय वाज देयर. लेकिन ऑस्कर and Willian also, you can say both kind of were starters in the team. Or KDB couldn't have played centrally or wide. I agree there. But in my opinion, KDB started our first Premier League game. आपको याद होगा तो do watch back the reels if आपने नहीं देखा है तो. KDB started the first game. He did well. Then एक cup game आया. वहां पर I think if I'm not wrong, Mourinho did not like his attitude, and then things changed. So I think it was too soon to call. That's all I'm saying. Okay, Vinicius getting the ball on the left hand side, and I think he'll score. Nahin, I think there are 2-3 players closing on Vinicius. लेकिन offside भी हो गया यार. Vinicius का यही problem होता है कभी-कभी. We have to admit Pep की Man City is getting closer and closer for the Champions League glory. Yeah, मैंने तो काफी बार बताया, as much as we as Chelsea fans lot of times troll करते हैं that we have won 4 European trophies in the last 10 years. But at the same time, I would also say that both City and PSG, as much as we can say that bottling, etc., which is not true in my opinion totally. PSG to some extent, yes. But I would still say that you're getting closer and closer. Hum as Chelsea fans, we related to that between 2000 and 2012 anyway. So I can certainly relate. Okay. Fans blaming Glazers, but I don't see how they are the problem. They have spent a lot of resources. अरे दिव्यांशु, thanks for echoing me यार. चलो कोई तो मेरा अरे पेनल्टी होता यार. रोड्रिगो गिरे नहीं. It would have been a penalty knowing Real Madrid. लेकिन let's see, they are still having possession. Rodrigo on the right hand side is getting the ball. I don't think it's offside. I think he'll have a cutback. Wow, what a pass! And यहाँ पर cutback एक और किया शायद Valverde ने, to no avail. भाई what brilliant play. Okay, यहाँ पर quickly मैं बता देता हूँ. देखिए Divyanshu, as much as 100% agree with you, it is indirectly related. लेकिन हाँ, again fans again and again blaming the Glazers first or blaming the Glazers only is my main problem. You know, as an opposition fan, मुझे दिख रहा है यार, आप लोग ने कितना spend किया. You've not spent right. Yes, there is a problem because Glazers ने choose किया आपके indirectly, आपके recruitment team हो गई, आपके management team हो गई. They have only kind of chosen, right, in a way. So you have to blame them, but doesn't Sir Alex Ferguson and team also have a say in Manchester United? I thought they do. So I don't think, again, I'm not blaming him, Sir Alex. I'm just saying that at the end of the day, there are a lot of wrong decisions being taken at the club. I don't think Glazers can be questioned only. पैसा दिया यार उन्होंने, काफी पैसा दिया. Yes, they have just bought a couple of players every season new for the managers. Lekin at the end of the day, they have spent quite a lot. One of the highest spenders in the last 10 years. So how can you argue that it is the Glazers? They care to some extent at least. नहीं तो क्यों spend करते इतना? I don't think they have spent only for the jerseys, right? KDB did decent in some of the games he played, especially क्या हो गया यार, match रुक गया. कोई नहीं. KDB did decent in some of the games he played, especially the first game he played was Hull. Yes, Jose didn't really give him chances. He had a spark back then. बिल्कुल. I remember that one long shot he had against Hull City as well. If I'm not wrong, he hit the bar. I still remember that like it was yesterday. Sometimes some things you'd never forget, right? We are helping Ankit Bhaiya to end stream in time so that he can get money. क्या ही बोलूं यार, मैं क्या ही बोलूं. आई एम लाइक टोटली, मतलब इसलिए आज वीडियो भी नहीं आई यार, शॉर्ट वीडियो नहीं आई. आई नो मैं, और पीपल व्हाट डू यू थिंक, शॉर्ट्स करना चाहिए हमें कि नहीं? देयर आर लॉट ऑफ रिकमेंडेशंस कि हम शॉर्ट्स भी शुरू करें. करेंगे भाई. अरे निपुन इन द हाउस यार, निपुन बिग अप ब्रो. Again, we have to meet this season sometime. But Nipun, NS Sports TV, is also fellow Chelsea fan. He knows his stuff inside out. We have been together on many streams, and he has been part of very many quizzes. He knows his stuff. Okay, he didn't suit Mourinho. Now the mistake we made, yeah, Adwe, but I think he suited Mourinho. मेरे ख्याल से De Bruyne was not the kind of player जो आज है. De Bruyne was actually a youngster who wanted to do well in every aspect उस समय. I remember that very well. लेकिन it was more like ego clash हुआ था उस समय. Never ask Real Madrid fans about the condition of Benzema between 2013 and 2018. Jose was always going to get rid of the youth that CFC assembled. Not much for future. Jose always
But current season, yes, that's a brilliant point. Okay, talk about Mata. Mikhail, if it's you, please let me know. What do you think? Mata is available, if I'm not wrong, on a free. Correct me if I'm wrong, people. Maybe I'm a romantic. We might lose. Yes. Can Mata not come off the bench and ping those balls? What do you think? Just a long shot, I know, but just saying. Owners need to have a vision. Look at Sheikh Mansour, FSG, and Roman Abramovich. They choose the right people. They have an ambition. Yes. So again, it is related to basically where the club is heading towards. But ऐसा नहीं है कि यार एकदम ही they are disinterested. That is what the allegation is. I don't think they're disinterested. Last year I realized that we don't need to be toxic when your team loses. It's just your team not good enough. Yeah, बिल्कुल nice. Thanks for sharing that. अरे किसी कोई देखो यार, वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे ना लाइन से, माय गॉड, क्या बैठे भाई. Casemiro getting substituted, looks like. Casemiro celebrating already, yaar. मतलब what a game he had. Casemiro man of the match already. What do you think, people? Or Benzema for those two moments. English fans and media will never blame the English players, especially Rashford, just because he has done the philanthropic work. नहीं रैशफोर्ड को काफी हेट मिलती है दिव्यांशु. आई ऑन ट्विटर दिव्यांशु, कम ऑन ट्विटर. तो रैशफोर्ड को काफी हेट मिलती है. लेकिन हाँ, आई अंडरस्टैंड मीडिया का, आई अंडरस्टैंड. फैंस तो यार करते हैं, काफी हेट देते हैं यार. अरे गुड नाइट यार, भाई कैसे हो? आई होप यू हैड फन एंड वी हैड फन हैविंग अदवे एज वेल इन द चैट. Mata with walking stick, LOL. I knew it. Thanks, bro. But remember the walking stick celebration of Samuel Eto'o. Again, talk about ego. That was a clear case of ego. Yes, Samuel Eto'o was almost finished as well. Won't say that he was the best striker in the world. लेकिन मेरे ख्याल से वो एक और सीजन दे पाते. हाँ, ड्रॉगबा आए थे नेक्स्ट सीजन और हमें हेल्प किया काफी ड्रेसिंग रूम में, और ड्रॉगबा एटो दोनों साथ में तो रहते नहीं ड्रेसिंग रूम में. तो फेयर इनफ, जो हुआ इन द एंड हैपेंड गुड. लेकिन after 1 year, when he had a decent year, getting a hat trick against Manchester United, I thought वो रहेंगे. Is that walking stick celebration that he did? No? Clearly, Jose Mourinho called him that he must be 39th or 40 or whatever. Arey, all good, yaar, all good. Thank you for joining. Do not forget to like the stream. काउट प्लेटफॉर्म है एक. अरे पता है यार, मैं काफी बार गया भी हूँ बाबा और उस्मान भाई के साथ में. इनफैक्ट आई पार्टिसिपेटेड. इनफैक्ट दिव्यांश के तो एक क्विज में आई वन द क्विज. आई डोंट नो आपको याद है तो. आई एक्चुअली वन द क्विज. तो एनीवे, काउट में मैं काफी बार गया यार, मुझे अच्छा भी लगता है. लेकिन वही है, मतलब देयर आर सर्टेन फॉर्मेट्स यार, आई वुड लव फॉर देम टू कंटिन्यू. सर्टेन फॉर्मेट्स हम कंटिन्यू करेंगे. तो दैट इज हाउ द थिंग गोज, राइट? बिकॉज I love what they do, and I love the idea. लेकिन वही है, always game for any quizzes, yeah. People know that in the community. Mata was a different enigma in 2011-12 UCL title run, 34 assists in the season, if I'm not wrong. Wow. You know what? Mata was a back-to-back player of the year, and then Jose Mourinho got rid of him. How would a Chelsea faithful feel? So there are certain decisions of Jose Mourinho. Yes, probably for the team it was needed. By Camavinga getting a good tackle, by the way, from a Frankfurt player. Welcome. लेकिन हाँ, at the end of the day, Mata, maybe in hindsight, आप बोलोगे like a Costa, these were good decisions taken by managers because they didn't turn up to be the players that we thought they would. Maybe those are also faults of their future coaches. जो Jose Mourinho खुद बने at Manchester United. Okay, Frankfurt का player injured है यार. कौन है भाई? Let's see who is this. कोलोमानी कौन है यार ये? आई डोंट नो. एनीवे, फ्रैंकी डियोंग फ्री में ले लो, प्लस 25 मिलियन भी ले लो, बट जेम्स दे दो ना. अरे नहीं यार, जेम्स तो नहीं आ रहा है. फीफा में भी यार मैं कम से कम 100 मिलियन में नहीं बेच रहा जेम्स को, याद करिए. तो यार यहाँ तो क्या ही तो भेज 100 प्लस एड ऑन. बाय द वे टॉकिंग, इट्स ऑलवेज टेक्स स्पेशल टीम्स टू विन यूसीएल. Be it last year Real Madrid, three-pit, Chelsea of 2011-12, yes, was a special team. Bayern, Bayern की brilliant team थी यार. Bayern 2013 and Bayern 2020 was awesome as well. Liverpool 2019, yes, बिल्कुल. Big up Ankit, says AD, big up to you as well, bro. And yes, Barca, Chelsea doing madness, bro. What do you think about Frenkie? What's your gut feel? Mixed reports. Gerard Romero saying that it's in the last phase. What do you think is happening between Aubameyang and Depay? Do you see Barca losing both of them? I really doubt it. I feel only Depay might move on to Juve while Aubameyang will stick on, and Chelsea again won't learn a lesson going for players who are not achievable. Hopefully we get a Fofana
and we get a Frenkie as things stand, right? Don't you think? Okay, but who am I quiz is just unique. I don't think you need to tweak a lot of things, but just yeah, बिल्कुल वो तो रहेगा यार. That will always check. मतलब मानव आपने पता नहीं आप चेक किया है क्या? हम who am I सीजन 1 से भी करते हैं ना, तो ये थर्ड सीजन है. तो पीपल सीजन 1 में था ओनली चेल्सी, तो वहां पर trust me, you'll get to know what a Chelsea fan I was like. Those are things that you cannot Google and find. So I feel that I genuinely feel ये बड़ा चिप ने बोल रहा हूँ I know, but I don't think there exists a quiz in maybe I might be wrong, but there exists a quiz in footballing community of the world. Yes, who kind of educates you as much as the Who Am I Part 1 did for a Chelsea fan. तो वो था एक क्विज. आई एम प्राउड ऑफ दैट एंड आई नो दैट कितनी मेहनत लगी थी और मैं एंजॉय करता था एंड एवरीवन एल्स डिड. बाबा केम देयर एज वेल, डिड वेरी वेल. Lot of others did. I think Tom Overend, who's a big Chelsea fan, came there. He messaged me just today that he would like to come on again because he loved that format as well. Second format था अपना प्रीमियर लीग का फॉर्मेट, जहाँ पर हेड टू हेड शुरू हो गया हमारा. तो वहां पर we didn't continue much because we launched this third one, but we had fun in the second season as well. Thanks Manav again. Dan, again you can all find all this and not just this. हमने एक लास्ट 20 years का सीरीज शुरू किया था, वो भी कुछ वीडियोस है काफी इंटरेस्टिंग. चेक देम आउट. वील कम बैक टू देम व्हेन टाइम परमिट्स एज मच एज पॉसिबल. अरे ये क्या हो गया यार, मैं सोचा गोल हो गया. नहीं, डैन जेम्स तो सर गायब हो गया यार. डैन जेम्स ना लीड्स में है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आई थिंक डिसेंट है फॉर देम. नॉट अ ए क्लास प्लेयर बट आई थिंक इज डिसेंट फॉर देम. ओके, यस यस, बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल करते हैं यार. आदित्य डू डू चेक द मॉडल, शाउट आउट यार. बाय द वे हम फीचर करते हैं काफी चैनल्स को, आदित्य एंड एवरीवन एल्स एज वेल. हम वी हैव फीचर्ड अ लॉट ऑफ चैनल्स बिकॉज मी एज अ फुटबॉल वॉचर, एज अ कम्युनिटी पर्सन लर्निंग फ्रॉम देम एज वेल, आई लाइक देयर चैनल्स, सो दैट्स व्हाई हम फीचर करते हैं. तो काफी चैनल्स हम फीचर करते हैं. डू आई वुड सजेस्ट गो एंड support them as well, but again if we can get even more support it's absolutely fantastic. तो सब लोग को support करिए as much as it's possible, of course. Gerard PK may give up. Oh my god, again politics. Is it politically related? Twitter is a toxic snake pit. Jumping in and complaining about toxicity on Twitter is pointless. Yeah. सच में सबसे बिल्कुल बिल्कुल यार. मतलब मिकाइल hitting it on the head as always. Dan James, yeah. Barca will only let Depay the season and will keep away. Yeah, बिल्कुल, I agree with you. Yeah, you tell me, Chelsea fans. Matlab, I know Mikhail is in chat. I think Darren, I don't know if he's there. Adway is left, but there are a few Chelsea fans as well. Even Chelsea fans, you tell me, why are we going with Aubameyang? Yes, he might fit Tuchel. Yes, there might be always a price. There's always a price for every player. But didn't he do what he did at Arsenal? Yes, Tuchel has managed him well. Oh, nice free kick यहाँ पे, but हुआ नहीं कुछ. Goal kick, कोई नहीं. So it's unrealistic expecting Barca to sell Aubameyang in 6 months of time. I don't know. And then bring him to London, where he did not uproot trees. He did well, but yes, he scored the FA Cup final goal against Zuma. I remember that. Cannot forget that ever. Zuma bamboozled totally. But I still have my doubts. I think, yes, Depay is not a finished element, but I think that was the easier deal and we could have focused on our centre back situation. I don't know, just saying it out there. Frenkie and Oba will be mercenaries at Chelsea. Neither wants to be at Chelsea. Chelsea wants them more and they want than they want CFC. Yes. Again, Aubameyang, come on, he's just looking for some place where he can start, if at all. I think he's happy at Barca as well. So that's the thing, and that's probably a red flag. The fact that he's happy being a backup, that's also one red flag, right? So again, yeah, बिल्कुल बिल्कुल मानव, वो थोड़ा हार्ड था. The idea was that it was more of education rather than entertainment, simply put. Or involvement, obviously, yeah, it was basically little bit more of history. So it was a bit to celebrate our heroes of the past, but present भी था. लेकिन हाँ, 40% was heroes. अरे यार, Frankfurt turning on the game in the last 15 minutes. अरे
मैंने इन्वेंट नहीं किया है, बट थैंक यू. Yes, I found and played with that. Of course, by the way, it was recommended by my niece. I have to give her credit here. Yes, my niece, who's what, 8 years old, uh, actually started watching you in a strange way. Some sent super chat on 442 football channel live that you had lost your channel and to support you. Wow, I don't even know about that, bro. Come on. Wow, I didn't even know about that, Aditya. I swear I didn't know about it. Yeah, much love to them as well, जिन्होंने भी किया था सुपर चैट भाई. लेकिन सुपर चैट 442 में क्यों जाकर दिए यार? अगेन बिगा भाई, मैं 442 काफी देखता हूँ. देखता था. अभी तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन आई यूज्ड टू वॉच इट अ लॉट. सो आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड. डेफिनेटली मच मोर लव जो भी किया है. लेकिन एट द सेम टाइम यार, अभी आकर हमें भी दीजिए सुपर चैट्स. इतना ही बोलूंगा मैं. पीके डूइंग अ पीआर चैट. अरे क्रूज, brilliant game, yeah. Cruz going off. Cruz made some brilliant runs and made some brilliant crosses as well. Chouameni coming on, man. PK doing a PR stunt. Yeah, I agree with that. I agree with that. It's a win-win, right? Definitely. यहाँ पर बारसा सेव कर रही है सैलरी. यहाँ पर पीके बेसिकली कर रहे हैं. रूडिगर कमिंग ऑन पीपल फॉर डानी कार्वाहाल. Okay. Interesting. Don't tell me he'll play right back now. Left back तो खेल ही चुके हैं. Yes, he has played right centre back in a back three, but has he played right back? Yes, Rudiger used to play right back at Roma in an emergency situation. Let me see who's playing right back. Carval is off. Who's playing right back? People, do help me out here. काफी इंटरेस्टिंग है यार. अच्छा नहीं लग तो रहे, लेफ्ट बैक ही दिख रहे हैं यार मुझे. Let me see. I think it's left back itself. Oh no, he's playing right back. He's actually playing right back. Oh man. Yeah, yeah. एक में बाबा को देखा था आपके साथ एंड फ्रॉम देन हैव प्रॉब्ली टॉक विद यू मोर देन. ओह यस, या बिल्कुल यार, बिल्कुल. मतलब अगेन बिग अप टू बाबा यार. मतलब बाबा हैज बीन देयर फ्रॉम विद अस फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. आई रिमेंबर मैंने भी बाबा का वीडियो रैंडमली देखा था एंड आई फॉलोड हिम एंड देन मैंने एक ऐसी मैसेज डाला था एंड आई काइंड ऑफ बिकेम फ्रेंडली विद हिम. तो दैट्स द आइडिया ना. मतलब एट द एंड ऑफ द डे आप जैसे भी हो और हम मे भी रिलेट किए बिकॉज बोथ ऑफ अस आल्सो कम फ्रॉम दैट peak Jose Mourinho times. So वहाँ पर भी थोड़ा सा we kind of connected well. Oba has clearly mentioned that yeah बिल्कुल Chelsea time waste कर रही है दिव्यांशु. I 100% agree with you. 100%. ग्लोरी, अरे मुदित आपको याद कर रहे थे यार काफी. कहाँ पर हो आजकल? अरे अच्छा फ्री किक कोटवा, लेकिन लेट इट गो. कोटवा मैन, ही इज बिकम अ गुड जजर ऑफ द बॉल. प्रॉपर. कोई नहीं. uh, चलो अभी यार. और क्या लगता है 5 मिनट्स में एक गोल हो जाए? एक गोल तो बनता है फ्रैंकफर्ट का. कम ऑन. By the performance, they deserve one goal. Don't you think so? Or yes, people who are joining in, again, do not forget there's a subscribe target, there's a like target. Let's get there. Doesn't take a buck, but yes, we are definitely monetized. So आपको लगता है अगर we can go back and put it into the channel, it's definitely welcome. And yes, आज शायद रक्षाबंधन है, so happy रक्षाबंधन for people watching and celebrating. So based on that, मैं शायद लेट रात करूँ थोड़ा स्ट्रीम. ठीक है, आई मे नॉट डू इवनिंग स्ट्रीम, लेकिन या तो मैं करूंगा अर्ली अर्ली और लेट आफ्टरनून स्ट्रीम, अर्ली इवनिंग स्ट्रीम, या तो लेट नाइट स्ट्रीम और लेट इवनिंग स्ट्रीम. ठीक है. या तो वीडियोस तो आएंगे. मतलब दैट इज समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉर टुडे. लेट्स सी. I used to watch English YouTubers because I don't know about Hindi speakers. It was Euro 2020. Oh yeah. By the way, Euros ka yaar, I don't know if Mikhail is still there, but I still feel Who Am I is one of my best creations as of now. मैं तो यार शुरू कर रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ जैसे क्या तो खाट लिया मैंने. लेकिन हाँ, डेफिनेटली यूरोज भाई. यूरोज यू जस्ट चेकआउट. एक टाइम लेकर ना कोई भी मेरे यूरोज के स्ट्रीम देखिए. थोड़ा एक एक घंटे का स्ट्रीम है, लेकिन आप देखिए. there is something unique about it. Just go and watch it. That's what I would request you all. So I think there is something unique about it totally, and I don't think that idea I've continued. I probably should have अगर मेरे पास टाइम होता तो, एनर्जी होता तो. But I think there's something unique about it. आपको अच्छा लगेगा. लेकिन not just that, हम काफी काफी बात करते थे, काफी वेरियस टॉपिक्स डिस्कस करते थे यूरोस की स्ट्रीम्स में. आई थिंक those were my first set of streams by the way, and I like them as well. Can you imagine? Oh, no problem, yeah, no problem. Much love to you. मतलब again, यार again people,
डू एज मच एज यू कैन डू यार, मतलब मैं मतलब लाइफ में एक चीज सीखा हूं ना, आप काफी चीज चाहते हो, बट डू एज मच एज यू कैन डू और डू व्हाट यू वांट टू डू. यस, देयर हैज टू बी अ प्लान, लेकिन ओवर प्लानिंग मत करिए कोई भी चीज का. अरे नाइस प्ले भाई फ्रैंकफर्ट यार, 1-2-3, 1-2 ही नहीं 1-2-3 हो गया यार. बहुत ही अच्छा प्ले, लेकिन एंड प्रोडक्ट नहीं था बिकॉज वॉल था रियल मैड्रिड का अच्छा, बहुत अच्छा बिल्ड हुआ था वॉल. तो दैट इज हाउ इट वाज. एंड यस पीपल, कितने लाइक्स हुए यार देखते. आई होप लाइक्स बढ़ गए हो. अभी तक मैंने चेक नहीं किया है पूरे स्ट्रीम में यार, आजकल लाइक्स कम हो रहे हैं ऑन ऑल द स्ट्रीम. सो इफ देयर इज एनी पर्टिकुलर रीजन लेट मी नो. या लोग भूल जाते हैं, आई नो इट हैपेंस विद मी एज वेल. अगेन लॉट ऑफ पीपल लव माय कंटेंट, आई नो दैट इज वेल. तो अगेन आप लोग अगर हो सके तो शेयर करिए, करिए. लाइक आई सेड इन मेनी स्ट्रीम्स यार, मेरा वो कॉलेज गैंग और व्हाट्सएप गैंग और वो सब है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. तो आई जस्ट गो विद व्हाट आई हैव. अपना काम करते रहते, बाकी यार फुटबॉल देखते रहते, एंजॉय करते रहते स्पोर्ट, और इधर उधर का काम तो चलते रहता है, राइट. सो दैट इज हाउ वी डू. So hopefully if you guys can help us, of course, if we can go to that level where we kind of get a team. Mikhail is one of them who's been there from very beginning. Kochila is one more person. We are trying to do एक weekend में stream, तो एक weekly एक weekend में stream करेंगे. So we are planning to do. Let's see if we can launch something like that. If we can get a basic a timing. क्योंकि यार I know that we are in different time zones also. लेकिन कोई नहीं. Mikhail enjoyed my series one. Great competition of Blues fans. Loving the expansion of scope to be all inclusive. बिल्कुल बिल्कुल. Yeah, मतलब वही है. I think series one came naturally to me, Mikhail, because those are things that I always wanted to kind of tell the audience, or I wanted to kind of say that okay fine, as in simply put, I'll be very honest about it. कोई दो राय नहीं है. We ain't got no history. It's a very famous thing, right? Chelsea fans know about it. So we ain't got no history का basically opposite था हुए by series. Simply put, right? That was one of the things that मैं indirectly बोलना चाह रहा था. And at the same time, it's education for newer fans. और मेरे ख्याल से तो काफी इंटरेस्टिंग हम टाइम्स स्पेंड किए थे उसमें. Great coverage of a World Cup. Yes, बिल्कुल बिल्कुल यार. Mikhail 100%. Of course, I'm expecting you to be also on the panel, man, as Euros that you were there. So hopefully we'll sort out some times. I know it's at an odd time for you. What time will it be in Canada? I think it'll be an odd time. By the way, injury time शुरू हो गया. Stoppage time 2 minute और है out of 3 minutes. Let's see. But yes, World Cup content we'll probably do on this channel. So hopefully by then we can grow till 5K on this channel, and of course, maybe to 7K on the other channel, so that we can get much more backing as well. Uh, yeah, bilkul, bilkul. Thank you. UCL final, yeah, match. Which is more memorable to you apart from Chelsea and Milan matches? Okay, apart from Chelsea and Milan matches, is more memorable to me. Yeah, memorable. I have to say, again, थोड़ा biased ही हूँ मैं. Oh, Real Madrid scoring a third almost, but very narrow angle. Yeah, 2013, Robin scoring. Finally, Robin deserved a winner. Let's be honest about it. Yeah, इतने सारे major tournaments में Robin ने मिस किया था. Chelsea के साथ penalty मिस किया था, which was good for us. लेकिन World Cup में of course he missed against Casillas. Then 2013 में against Dortmund when he scored. Wow, that was a moment. That was, I know, quite recent. Or in the previous years, as much as I don't really like celebrating it, लेकिन the fact is I cannot deny कि जो लिवरपूल का comeback था ना, and against Milan था. So yes, that was against Milan, so I hope that counts. क्योंकि it was actually a Liverpool match memory. और as a neutral मैं बोलूँ तो some matches, let me think and bring some more matches to you. Yeah, again, maybe Porto. Porto winning that final, rather even before that beating Manchester United. That was one great match. I remember that Mourinho celebration and all that, right? As in running down the touchline. That was brilliant with the slide. Members, who am I competition to get more members? Let's go. Interesting. यार लेकिन मेंबर्स को ना, अरे जीत गई यार रियल मैड्रिड आज सुपर कप चैंपियंस पीपल, और यहाँ पर चेल्सी गिविंग इट अवे टू रियल मैड्रिड इन अ स्ट्रेंज सेंस. तो पता ही था, लेकिन कंग्रेचुलेशंस मैन. डेविड अलाबा विंस अ सुपर कप एज वेल. व्हाट हैज ही अचीव्ड नॉट आफ्टर गोइंग टू रियल मैड्रिड? David Alaba scores as well, but not just that, by Benzema. Benzema standout. Who was the standout in the match? Casemiro or Benzema? मैं बोलूंगा Casemiro. Just about Casemiro. What do you think? So we'll come back to this.
या मतलब उस समय टू बी वेरी ऑनेस्ट मानव, आई वाज़न्ट लाइक अ ह्यूज मिलान फैन, मतलब आई वाज़ नेवर अ ह्यूज मिलान फैन एनीवे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं यहाँ पर आई एम नॉट गोइंग टू सिट एंड से दैट आई एम एज़ बिग अ मिलान फैन और एज़ अ चेल्सी फैन। आई एम डेफिनिटली अ चेल्सी फैन। आई हैव अ मिलान सॉफ्ट कॉर्नर हू लव्ड सर्टेन मिलान प्लेयर्स, ठीक है? तो लेकिन एट दैट इन दैट मोमेंट सच में मैं बोलूँ तो आई वाज़ लाइक वॉव! आई वाज़ जस्ट डम्बस्ट्रक सिंपली पुट। ऐसा दुखी-वुखी वाला नहीं था सीन, मुझे पता था क्योंकि काका तो बहुत अचीव करेगा और 2 साल बाद में दिखाया एनीवे, दे वन इट राइट? तो दे वर डेफिनिटली देयर। स्टिल कांट गेट इट, कार्ड का चक्कर लेट्स सी। अरे मेंबर नहीं बन पा रहे वरनर बस तो। यार अगेन वो मेंबर वाला ना प्रॉब्लम ये है कि यार इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोज आर ऑन यूट्यूब राइट, मतलब दोज लाइव स्ट्रीम्स आर ऑन यूट्यूब। हाँ मे बी वील डू इट ऑन डिस्कॉर्ड, व्हाट डू यू थिंक? हाँ पीपल, उससे याद आया भाई, डिस्कॉर्ड का हमारा है लिंक, ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन फर्स्ट 3 लाइंस। तो डिस्कॉर्ड है, एफपीएल है, प्राइजेस होंगे, ऑफ कोर्स गेट अस टू 10K, बट प्रीटी श्योर हम हो जाएंगे एंड ऑफ सीजन तक। बायर्न वर्सेस बीबीबी बिल्कुल। ओके इंटर ओ यस, थैंक्स याद दिलाने के लिए भाई, दिस वाज अ ग्रेट मैच। हाँ मुझे उस समय थोड़ा सा ये था कि इंटर ने जस्ट बीट किया था चेल्सी को एंड देन दे बीट दीस टीम्स राइट, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन इन हाइंडसाइट आई थिंक आई हैव टू एग्री विद यू। बारसा 3-1 इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी 100% आई एग्री एंड दैट्स एग्जैक्टली द स्टेटमेंट जो मानव बोल रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ एज अ स्पेक्टेटर, लाइक आई से ऑलवेज, आई डोंट लाइक एनी टीम डोमिनेटिंग अ मैच, दैट्स जस्ट मी। Oh wow. Oh wow. I didn't know that. I didn't know that, man. Wow. Roma का कमबैक इन बार्सिलोना, वाओ दैट वाज आल्सो ब्रिलियंट, आई मस्ट से। भाई पीएसजी बारसा बहुत सारे मैचेस है ऐसे, मतलब एज अ, मतलब इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ इवन डेविड बेकहम डेज व्हेन ही यूज्ड टू प्ले फॉर मैड्रिड, देयर यूज्ड टू बी अ टाइम वेयर यू नो दे स्टिल डिपेंड ऑन हिज क्रॉस। तो आई थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ गेम्स यार, मतलब एज एन इंटरनेशनल फैन तो काफी है। I remember France doing madness in the Euros of 2004. Zidane ने जीता था against England. Then I remember obviously 98 World Cup. That was great as well against Brazil. So there are a lot of matches. 2006 World Cup. Wow, what a World Cup! One of my favorite World Cups as a viewer. Euro 2008. बहुत अच्छे मैचेस थे यार, काफी अच्छे हैं। अग्वेरो मोमेंट यार, अगेन एज एन ऑपोजिशन फैंस उस समय मैं सेलिब्रेट नहीं किया था ऑब्वियसली। आई विश बिकॉज अग्वेरो वाज लिंक्ड टू अस, रिमेंबर वी मिस्ड ऑन हिम। मैंने एक वीडियो किया था यार, पीपल दैट वी वर लिंक्ड टू एंड वी लॉस्ट इन ट्रांसफर वॉर, सो ही इज वन ऑफ देम। येलो कार्ड नहीं दिया आज, येलो कार्ड एक भी नहीं हुआ क्या? ओ माय गॉड, रियली? आई डिडंट इवन नोटिस यार। अरे हुआ यार, एक हुआ 92nd मिनट में हुआ, लूकस अलायरियो लास्ट में जस्ट फॉर नेम सेक आई थिंक ही गॉट इट। कोई नहीं, चेल्सी 4 नापोली, या आई थिंक द क्वेश्चन वाज नॉन चेल्सी नॉन मिलान, सो इसलिए चेल्सी के तो यार मैं आई कैन डू स्ट्रीम्स एंड स्ट्रीम्स दैट इटसेल्फ मालूम। लेकिन हाँ डेफिनेटली यार, थैंक्स, यू आर न्यूट्रल सो फॉर यू इट्स वैलिड दिस आंसर डेफिनेटली। यार बाय द वे पीपल, रियल मैड्रिड हैव वन। आप देखिए ना द कामनेस इन दैट 11 है, मतलब दीज आर एक मेंटालिटी यार, दे हैव अ मेंटालिटी। यस इट्स जस्ट फ्रैंकफर्ट, इट्स जस्ट द फर्स्ट बिग गेम ऑफ द सीजन, बट they have just taken their moments. That is the class, that is the difference. That is why I'm going on saying that Chelsea need a number 9, a proper number 9 who actually knows how to move, knows how to score. भैया कभी ये हुआ है कि sometimes you meet someone who just started watching football and they just be like show off and कुछ भी कह रहते हो, do you feel cringe at that time? आई डोंट नो व्हाट टू से यार, यहाँ पर थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, हो जाएगा आदित्य, लेकिन आई डोंट स्टे सिट ऑन द फेंस, आपको ये भी पता है भाई, है यार, आंसर इज यस 100%। लेकिन इंस्टेड ऑफ laughing at them and or instead of basically feeling that you are okay, what are you feeling, I think the idea is लोग गलती से ही सीखते हैं। और अगर कोई नहीं जानता, लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन फुटबॉल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू सिट हियर एंड से दैट आई एम एन एक्सपर्ट, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई डोंट फॉलो इंडियन फुटबॉल एट ऑल। हाँ मैं कवर नहीं करता हूँ एज मच, बट आई कवर बिकॉज पीपल हु फॉलो माई कॉन्टेंट एंड टू एंड नो दैट आई कवर इंडियन फुटबॉल इज वेल। लेकिन वही आदमी कितना कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई डिस्करेज करता है कि भाई यू आर अपॉर्चुनिस्टिक, यू आर कवरिंग इंडियन फुटबॉल बिकॉज अदर्स आर, दिस इज रॉन्ग। अब फाइनली अगर इफ समवन इज डिसाइडिंग टू कवर और टॉक अबाउट इट और नॉट टॉक अबाउट इट, इज देयर चॉइस, यू हैव टू गिव इट टू देम। और कोई अगर अच्छा चीज कर रहा है, व्हाई डोंट एनकरेज, व्हाई इज द डिस्करेजमेंट, व्हाई इज द टॉक्सिसिटी? मैं ये बोलता हूँ, तो समवन अगर कोई नहीं जानता है बात भी करता है,
you correct them rather than laugh at them, or not in public but privately. That's what मैं बोलूंगा आदित्य. Cards be like we miss Ramos. यार Ramos पता नहीं यार, मतलब do you see Seth, do you see Ramos' career getting revived at PSG season? सब सच में लग रहा है कि यार he can be a injury free season for Ramos और वो खेलेंगे अच्छा, मुझे लग रहा है यार, गट फील आ रही है मुझे, और इसलिए मैंने फीफा में भी लिया था. ईपीएल में एवरेज में भाई एटलीस्ट 3 ऑन एवरेज, एक टीम के 2, एक टीम का 1 समझ लो, इतना एवरेज होता है मेरे ख्याल से. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग पीपल, लेकिन हाँ कभी कभी ज्यादा भी होता है, कभी कभी कम भी होता है. ओके, क्वेश्चन फिर, ऑल बारसा साइनिंग दिस प्लेयर, हाउ फार विल दे गो? यार it's a phase for Barca. I don't think this is a permanent thing. Pretty sure Barcelona being the institution they are getting into a lot of risk. लेकिन the idea is अगर वो risk pays off, they can be here for years together. Who knows, right? Hala Madrid season starts the trophy. Adria, congratulations to all the Madrid fans. Absolutely. लेकिन हाँ, as a Chelsea fan, not feeling great to be very honest that Super Cup जा रहा है. But again, रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग, रियल मैड्रिड सुपर कप और क्लब वर्ल्ड कप देखते होता है कि नहीं. हु इज द स्मार्टेस्ट इन टर्म्स ऑफ फुटबॉल आईक्यू इन इंडियन फुटबॉल क्रिकेट कंपनी? ये थोड़ा क्वेश्चन इनवैलिड यार, ये थोड़ा इनवैलिड क्वेश्चन है हमारा. बस आई डोंट वांट टू सिट ऑन द फेंस. द फैक्ट इज एवरीवन हैज देयर ओन वे ऑफ थिंकिंग, everyone has their own knowledge. Again, I cannot question the people who were babies at the time when I started watching football. That's also unfair, no? But at the same time, uh, someone might have played at a certain level, someone might have not played at a certain level but still maybe read more. तो यार थोड़ा सा unfair है question. In fact I won't go there. लेकिन I feel that everyone has their own kind of thing. अगर मैं इतना बोल देता हूँ, चलो अगर मैं किसी को इस पैनल में ला रहा हूँ, ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे बुला रहा हूँ, एंड आई कॉल अ लॉट ऑफ पीपल हु डोंट कम एज वेल, तो वो बेस्ड ऑन द टाइम व्हिच इज टोटली फाइन एज वेल, ठीक है. लेकिन I call them because I trust them. I call them because I believe in them. I follow them. इसलिए मैं लाता हूँ. और I genuinely believe that everyone has their own space. Everyone is good in some aspect. There are certain aspects जहाँ पर I might be learning from someone who just started following football. काफी चीज, क्योंकि यार that is the brilliant part of football. You don't really go by hierarchy all the time. लेकिन at the same time, there you cannot ignore or negate the fact that some people might actually know much more because of just their experience level. So that's a bit of to both. You have to be able to kind of as in take everyone's opinion there. Okay, I started to follow Real Madrid because of Bale, Barca, and City, Johad, and Eden Zeko. Nice. So, what do you think? Do you want to wait for the medal ceremony? I think it's done. 2:30 baje was my deadline time, so I'm just happy that Real Madrid has won. And yes, people, whoever joined the stream, cannot thank you enough. I thought we had a lot of, as in candid conversation. We liked it, pretty sure. अगर like किया तो भाई ठोक दीजिए like. Or remember, it's a fan channel for all to see. It is, it was, and it always will be. Definitely much love to everyone. But we will be back. We have done a great OMI quiz on Almighty Blues FC. Please वो देखिए पहले अगर आपने मिस किया है. But not just that, we are coming with a lot more. Yes, it's going to be a crazy weekend of football. Before that, of course, FPL भी आएंगे वहां पर. Definitely happy festival for those who are celebrating today. Hopefully we'll come with one live stream. FIFA हो जाए, FIFA आज रात को, तो आज रात को FIFA होगा मोस्टली, लेट रात को. उससे पहले आई थिंक आई माइट बी लाइव ऑल्सो ऑन जीशान भाई चैनल, तो we might do that, and before that I might release a video. तो ये है प्लान आज का. लेकिन as always again thanks. Yes, मैंने क्वेश्चन नहीं लिया हो तो सॉरी, but for next stream we'll carry on. And अभी के लिए good night and congrats to of course हाँ yes absolutely यार, आज रात को करेंगे होपफुली 11 बजे, आज रात को 11 बजे. लेकिन congrats to Madrid यार, congrats to Madrid भाई, फर्स्ट बिग ट्रॉफी उन्होंने जीत लिया यूरोप का. और yes, we cannot wait यार. UCL ड्रॉज आने वाले 25 अगस्त, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और वो भी हम कवर करेंगे. तो अभी तो टाइम है, उससे पहले we'll talk a lot about La Liga, Serie A, be it Premier League, whatever this weekend. We'll be live for that on Friday, but Thursday, as I said, FIFA plus transfer talk and maybe a video before that on Almighty Blues FC or here. Take care. Bye.